Hey, good evening, everyone. Welcome to PT Money's Advanced Technical Analysis and Option Traders Masterclass. First of all, I welcome all the participants. And my name is Neeraj Gogoi. I'm going to be the host for this particular event. First of all, thank you so much for joining this program. And before I start, very quickly introduce what the event is all about. It's going to be a program where we are going to learn about technical analysis, how to anticipate the market direction, and then we are going to learn option strategies, how to use the right option strategies for the event, right? So this is going to be a 4-day event. First 2 days, we are going to talk about charting, all different technical indicators, price actions, and a day 2, different option strategies. We are going to start with simple momentum intraday option buying, call option, put option buying strategies. To gradually will gradually move on to complicated strategies, a little bit advanced strategies, which will include straddle, strangle, bull call spread, bear put spread, all these strategies. And also during this particular training program, you're going to learn not only how to take the strategy, but how to manage the strategy as well. So before I start again, very quickly, what Paytm Money Talk is, what Masterclass is all about. Here, actually, we try to get the best of the industry experts with decades of experience to here, so that they can share their knowledge, they can share the skill, and we try to keep the whole training program as practical as possible. So again, before we start, let me very quickly read out the disclaimer for the event. So investment in securities market are subject to market risk. So read all the related documents carefully before investing. Representations are not indicative of future result. All the discussions are purely educational in nature and are in no way an advice or recommendation, right? So having said that, the first session today is going to be on charting. Okay, price action and charting. And you know that this is the crux of any trader, whether you are an equity trader, short-term intraday trader, a momentum trader, or even option strategy. You need to understand chart, right? So here the first speaker is Mr. Manish Shah. And Manish Shah, let me very quickly give you his introduction. His total number of years in the market is around 25 years. He is a SEBI registered investment advisor. He has been associated with many companies, many broking companies, top-notch broking companies in the country, as an research analyst, institutional as well as retail. And now currently he is a freelance trader and also trainer and an advisor. By qualification, he is a chartered accountant. And this is what Manish is going to talk today. So Manish, can you just switch on the camera and okay, I cannot start. Host, please, can you enable this video? Yeah, switch on your camera, please. It'll do. Okay, hi everyone. Good evening and welcome to this session on candlesticks, advanced candlesticks and patterns. So, uh, okay, this program probably is going to be Hindi and English. So, Yes. I hope everybody enjoys it, everybody learns from it, and everybody prospers from it. Neeraj gave a great introduction about myself. So, we have survived in the markets for a long time. 20-25 years is a fairly long period of time, and over the years, I have learned a lot about markets, right? So, काफी market ने समझाया है, सिखाया है, थोड़ा जो भी बुरी आदतें थी over a period of time, वो सब when it comes to trading या training whatever, तो वो सब आहिस्ता आहिस्ता निकल जाती है. सो एज यू मैच्योर इनटू द मार्केट, जैसे आप शयाने होते हो मार्केट्स में, जब भी आप एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो यू टेंड टू बिकम slightly more guarded, wait for those opportunities to come, rather than jump trying to find something, opportunities which may be lacking. ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार मार्केट्स में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है. तो मार्केट भी ऐसा है, किस्मत की हवा कभी नरम तो कभी गरम तो कभी नरम गरम, an old Bollywood song. So that's also the case with the markets. So uh, so I've been training also for a long period of time. Research तो है ही, आज भी है. So I am also associated with various institutions in varying capacities.
Uh, I give trades on all time frames, whether intraday hai ya long term investments hai, momentum trades hai. I'm also an advisor to a couple of PMS funds. I also look at other markets apart from equities, obviously stocks and beyond, commodities, currencies, and so on. So I'm a full-time professional technical analyst. Teaching background is it goes back for more than 10 years. I have also done a lot of training programs for Bombay Stock Exchange, some very big broking houses. Even today, I do a lot of training programs. And a very big thanks to Paytm Money for inviting me to do this session. Personally, I think I have learned it the hard way. My price action analysis, whatever I have learned it the hard way. Uh, so what I can do is that I cannot eliminate your learning curve. मैं आपका learning curve को eliminate नहीं कर सकता हूँ. I can only shorten it. Mm-hmm. Okay, that's point number one. Point number two is that I can only teach. Mm-hmm. You will have to learn as a trader. You will mature as you spend more and more time in the markets. There is no substitute for practice. Okay, let it be. I'll put it bluntly. Uh, and market is a constant teacher. वो आपको हर दम हर पल कुछ ना कुछ नया सिखाता है. And so you should be like a sponge, जो absorb करता है. Try to accumulate, assimilate knowledge. And believe me, reading on books on technical analysis, even after 25 years, I still do it. I still go back to old text whenever I get the time. Just refer to some concepts, and they get ingrained into you. So it's just like playing a sports. I mean, you may be Sachin Tendulkar, you may be Lionel Messi, you may be Djokovic or any of those top players, but those basic drills that you have been taught in your learning period, in your initial stages, now they stay with you. Okay, because ultimately markets, they are a repetitive action. Mm-hmm. So with this note, let's start. I mean, there is a lot. This is a content heavy session, right? So we will not waste too much time in frivolities, and we'll straight go uh, into the meat of things. So I'll just share my screen. I'll just share this PowerPoint. So as the slide shows that it is, and one more thing, I'll just shut down my video. It's a kind of distracting to me, and we are going to talk about a lot of charts. Everything I will show you is going to be practically oriented. We will look at charts. We will try to come up with these trades by the end of the session, uh, and I will also show you how useful these techniques can be on how candlesticks can really help you in your trading. Okay, so I'll just shut down my video, and so this is going to be candlesticks using candle lines for decision making. So candle lines and candlesticks, they are both synonymous terms. So we'll talk about candlestick charts, but before we talk about candlestick charts, we'll also look at some why what are prices, basically what happens when you look at a price, uh, and uh, and and how pricing can how observing the price on a regular basis, on a continuous basis, can help you with better decision making. Okay, so candlesticks as such is an offshoot of what basically charting the way it was done uh, uh, prior to candlesticks appear on the scene. So I'll just give you a brief background about this. Candlesticks was introduced to the Western world by a gentleman called Steve Nissen. And this happened in early 2001. I think he came up with his book, Candlestick Charting Explained, in 2001. Then there was a second edition. He has also written another book called Beyond Candlesticks. So Steve Nissen, this gentleman named Steve Nissen, is responsible uh, for bringing to notice candlesticks as a charting tool amongst the Western audiences, right? And slowly it spreads throughout the world.
I'll just tell you a small incident, right? So this happened way back, I think in late 1990s, early 2000. There used to be an extra charge among software packages to show candlesticks on your charting platform. So that was the novelty. Now we have candlesticks everywhere. Each and every software has candlesticks. Okay. So now basically prior to candlesticks, a lot of people were only looking at what we call as the line chart. Okay. So this is just a simple stock you are seeing on your screen. It is just a simple stock. And the easiest way to plot prices was simply plot the close. Okay, so every day the market closes at 3:30. You simply take uh, the closing price and you plot it. Okay, it was a very simple way of doing it. In those days, there were no computers, and people just used to come home after the market and just put a dot on the charts. They used to do their charting manually, charting karte the. So now, but someone realized that okay, now मार्केट जस्ट सिंपली डजंट ट्रेड एट वन प्राइस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे. पूरे दिन के दरमियान मार्केट सिर्फ एक ही प्राइस पे ट्रेड नहीं करता है ना. सो इट गोज अप, इट गोज डाउन. सो इफ आई गो डाउन टू अ 30 minute and look at this, I mean, this is just a random stock, right? So it prices they have traded from, let's say, 1752, that they went down to 1740, and they rallied up to 1759. So on a close basis, on a close to close basis, you are using just one unique point, right? And that is the close of the day. So obviously the meat that has happened during the course of the day, now that gets missed out. Another thing that gets missed out is the range, right? So essentially range is the difference between the high and the low. So if this is the highest point for the day and this is the lowest point for the day, this is called as the range. Okay, so we just don't know that during the course of the day how the price travel. Okay, so then they came up with another way of looking at it. So they started to plot what we call as the bar charts. Okay, so now what you are seeing here on the screen is a bar chart. I just right. So uh, we'll just try to. Okay. So now what you have here is a bar. Manish, if you can use Hindi as well. Yeah. Sorry. Right, so this is a bar chart and it's colored red and green, but in those days it was all black. So when people used to plot these charts, they were in black and white. So now this Manish, is a better indicator of the price action. Why? Because it shows you the price that opened. So the small tick that you see on the left, right now, that is the opening price for the day. मनीष, Yeah. आप हिंदी में भी थोड़ा बताइए. हाँ ठीक है ओके Yeah. हाँ ठीक है. तो जो लेफ्ट साइड पे जो टिक है वो दैट इज द ओपनिंग प्राइस. वो दिन का ओपनिंग प्राइस क्या है वो आपको दिखाता है. okay? जो टिक राइट में है, दिस स्मॉल टिक दैट यू सी ऑन द राइट, okay, this is the closing price. The small tick that you see, that is on the, this is the closing price, uh, and this is the highest point for the day and this is the lowest point for the day. Okay, so essentially your bar charts use open, high, low, close, right? So they use the open, high, low or close. So these चार data point एक साथ में आ जाते हैं, right? So in one shot you can see all the four prices. So essentially the difference between the high and the low is called as the range. Okay, it is called as the range for the day. Very very important when you look at the markets. So it is called as the range for the day. So it was a big improvement, okay, over how people used to plot, but it used to also mean चार गुना काम करने का. Earlier you are only looking at close, now you have to plot 4 data points, but it is also more useful because you have other information also. Now in
this gentleman, Steve Nissen, he used to work in Tokyo in those days. He was posted in Japan, the Japanese desk, and he came across, some of his Japanese colleagues. They were using a different form of charts, right? And they were slightly different than at least in the look. They were slightly different. Okay, so what you have here is a candlestick chart. Okay? So now he got sort of प्यार हो गया उसको candlestick chart से. He got enamored by it, and he started going deeper into it. तो यहाँ पर भी the information is the same. Essentially, this is the same information. So open, high, low, and close. But now there is a slight difference in which candlestick is plotted as compared to bar charts. And the important difference is the way in which the candles are colored. Okay? So in a candlestick chart, a candle will be colored green if the open is above, if the open is below the close. Okay, मतलब price opened near the low and the closing price जो closing price था वो open के ऊपर था. So this colored candle was colored green. तो इसको हरा कैंडल बना दिया, ग्रीन कलर का कैंडल. तो ग्रीन कलर का कैंडल का मतलब क्या होता है कि the closing price is above the opening price. Okay, if the closing price is below the open, open and close, this candle will be colored red. Now, very, very important. So, this was a major change in the way charts were presented, right? So, उस जमाने में black and white monitor थे. तो ऐसे कहते थे कि hollow candles और shaded candles. तो hollow मतलब यहाँ पर आपका जो hollow में it just used to be this type of a candle, right? This was a hollow candle, so it means that the close is higher than the open. और अगर shaded candle है, okay, so it used to be shaded in black. ऐसा एक black color का candle होता था. The entire thing was black, so it was what we know now as a red candle. Okay, so now this also marked a major departure from the way people used to look at the prices itself. Okay, now if you just simply look at it, and if I ask you that how did the market behave today? So intuitively, what do we do? Okay, intuitively, we simply look at the market and let's say, okay, and we say that Nifty changed. Okay, so Nifty में कितना बदलाव आया? 2.85 पॉइंट्स का. ठीक है, बैंक निफ्टी में कितना बदलाव आया? 8.75 नेगेटिव था, ज्यादा, हालांकि आज ज्यादा मूवमेंट नहीं था. ओके, सो नाउ इंट्यूटिवली हम क्या समझते हैं कि मार्केट अच्छा कभी होता है? जब भी हम आज के क्लोज को अगले दिन के क्लोज के साथ कंपेयर करते हैं, राइट? तो आज हम देखते हैं ये व्हाटएवर द स्टॉक इज, टीसीपीएल पैकेजिंग, इट वाज अप बाय 2.46%. तो हमने इंट्यूटिवली क्या किया है? हमने क्या किया है? वी हैव कंपेयर्ड टुडेज क्लोज टू द प्रीवियस डेज क्लोज. ओके, नाउ कैंडलस्टिक्स में एक मेजर डिपार्चर क्या है? इट इज लाइकली, कभी कभार ये हो सकता है, इट इज लाइकली दैट
द क्लोज ऑफ द डे जो बंद भाव है वो अगले दिन के बंद भाव से नीचे हो सकता है, पॉसिबल है, ओके, बट it is also likely that this candle will be colored green. So intuitively what candlestick does कि वो ज्यादा अहमियत देता है to the close बंद भाव as compared to the open price, right? So it gives more importance, ज्यादा अहमियत देता है आज दिन में क्या हुआ, what has happened during the course of the day, दिन के दरमियान क्या हुआ as compared to how the close was as compared to the previous close. Okay, so it gives more importance to the relative movement of the price, okay, during the course of the day as compared to the normal western way of interpreting जो करता था close to close. Okay, so now every time, okay, every time you come across a news channel which talks about the market इतना ऊपर बंद आया, इतना नीचे बंद आया, look at the relationship between the open and the close. It will change the way you look at prices. Okay. Okay. तो जैसे आपका जो नजरिया है प्राइसेस का एनालिसिस करना, राइट, सो आपका जो नजरिया है वो चेंज हो जाएगा. ऑलवेज लुक एट द रिलेशनशिप, जो एक रिलेशनशिप है बिटवीन द क्लोज एज कंपेयर टू द प्रीवियस क्लोज. आज का बंद अगले दिन के बंद के भाव से कंपेयर डेफिनेटली करो, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे, दिन के दरमियान प्राइस ने क्या किया है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो नाउ so this is the standard time frame जो हम देखते हैं डेली. ओके, नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडर्स, अलग अलग प्रकार के ट्रेडर होते हैं, जो लॉन्गर टर्म ट्रेडर भी होते हैं, शॉर्टर टर्म ट्रेडर भी होते हैं, इंट्राडे ट्रेडर भी होते हैं. तो कैंडल स्टिक्स वी कैन ऑल्सो हम अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी प्लॉट कर सकते हैं. ओके, सो नाउ वी कैन गो टू अ मंथली चार्ट and we can plot monthly candles also. Okay, we can go to a weekly charts and we can also plot the weekly. तो weekly candles भी हम plot कर सकते हैं, हम monthly candles भी plot कर सकते हैं. okay, तो monthly candles में क्या होगा कि opening price जो होगा वो फर्स्ट ट्रेडिंग डे का, जो महीने का पहला दिन है शुरुआत का, उसका जो ओपन है हम उसे ओपन लेंगे. पूरे महीने में जो हाई और लो बनाया है वो आपका हाई होगा. एंड फाइनली कैलेंडर मंथ, यू ऑलवेज यूज कैलेंडर मंथ पे जो क्लोज आया है दैट विल बी द क्लोज फॉर द एंटायर मंथ. ओके, तो वीकली के लिए क्या करेंगे, सेम थिंग. मंडे को जो ओपन होता है द फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक, या एज्यूम करते हैं कि मंडे छुट्टी नहीं है, तो वी विल टेक द फर्स्ट ओपनिंग प्राइस फॉर द मंथ. ओके, द प्राइस मूवमेंट जो पूरे हफ्ते के दरमियान होता है दैट विल बी द हाई ऑफ द वीक. एंड फाइनली फ्राइडे को जो क्लोज होता है उस हिसाब से आपका वीकली कैंडल बनेगा, राइट. सो डेली, मंथली, वीकली, दिस इज हाउ द प्राइसेस आर प्लॉटेड. सो नाउ द क्वेश्चन इज कि हम लॉन्गर टर्म वीकली चार्ट्स क्यों हम प्लॉट करते हैं, हम लॉन्गर टर्म मंथली चार्ट्स क्यों प्लॉट करते हैं. तो इसका जवाब यह है कि अगर अगर आप एक लॉन्गर टर्म ट्रेडर हो, जिसको आपको शायद कोई भी एक स्टॉक को 4 महीना, 5 महीना, 1 साल तक आपको होल्ड करना है, तो आपका जो एनालिटिकल टाइम फ्रेम है वो मंथली होगा. ओके, अगर आप कुछ हफ्तों के लिए, मान लीजिए 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते तक, अगर आपको 2-3 महीने तक कोई ट्रेड चाहिए, तो ज्यादातर आप पोजिशनल ट्रेडर अगर आप हो तो आप वीकली चार्ट्स को एनालाइज करोगे. ओके, वीकली और मंथली के बारे में ये भी कहा जा सकता है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में भी हम यूज करते हैं वीकली का जो
डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड है, फिर या तो वीकली में करेक्शन वगैरह आया है, तो विल टॉक अबाउट ट्रेंड्स। जो ट्रेंड्स के बारे में है वो उसका टॉपिक हम डिटेल में हम बात करेंगे कल के सेशन में। Okay? तो सो वी लुक एट डेली, वीकली, मंथली। यू कैन ऑल्सो प्लॉट, आप इंट्राडे पर भी प्लॉट कर सकते हो। बेसिकली यू कैन ऑल्सो लुक एट अ 30 मिनट टाइम फ्रेम। अगर आप बहुत ही शार्प शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, स्पेशली इंट्राडे ट्रेडर, तो यू कैन ऑल्सो प्लॉट 30 मिनट्स टाइम फ्रेम। बट निसन ये कहता है कि ज्यादातर कैंडलस्टिक का पैटर्न दे वर्क वेल ऑन द डेली टाइम फ्रेम और हायर। ओके, तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप कैंडलस्टिक्स को प्लॉट करो, और यू नो एंड आपका जो एनालिसिस है वो ज्यादातर आप बेस करो डेली टाइम। ओके, सो हमने ये बात किया है डेली, वीकली, मंथली, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या नहीं है। सो नाउ, ओके, सो नाउ लेट अस गो डीपर इनटू द कैंडल्स। कैंडल्स का कंस्ट्रक्शन के बारे में हमने बात किया कि रेड कैंडल क्या है, ग्रीन कैंडल क्या है। तो जब भी आप कैंडलस्टिक को प्लॉट करते हो तो कैंडलस्टिक्स के बॉडी और उसके अपर शेडोज और लोअर शेडोज। तो जो कैंडल है, एसेंशियली जो फर्क है बिटवीन द ओपन एंड द क्लोज, ओके, इस पार्ट को हम कहते हैं रियल बॉडी ऑफ द कैंडल। इसे क्या कहते हैं? रियल बॉडी ऑफ द कैंडल। इट इज कॉल्ड एज द रियल बॉडी। ओके, तो इसका एग्जैक्ट हिंदी अनुवाद मेरे पास नहीं है। इट इज कॉल्ड एज द रियल बॉडी ऑफ द कैंडल। जो कैंडल के ऊपर एक छोटी सी लाइन जाती है, तो इसे हम कहते हैं अपर शेडो। क्या कहते हैं? अपर शेडो। मतलब ऊपर का जो हिस्सा है, रियल बॉडी के ऊपर जो हिस्सा है, उसे हम कहते हैं अपर शेडो। और रियल बॉडी के जो नीचे है, जो नीचे का हिस्सा है, हम उसे कहते हैं लोअर शेडो। उसे कहते हैं लोअर शेडो। तो ये क्या काम का है, रियल बॉडी, अपर शेडो, लोअर शेडो? ओके, तो इसका आंसर ये है कि रियल बॉडी का जो रिलेशनशिप है शैडोज के साथ, उस हिसाब से कैंडलस्टिक पैटर्न्स के नाम दिए गए। राइट, सो देयर आर डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स which we will see in some time. Right, so upper shadow, रियल बॉडी एंड लोअर शेडो, ये है कैंडलस्टिक्स के अलग अलग विभिन्न प्रकार के हम भाग कह सकते हैं। वी कैन कॉल इट एज द वेरियस पार्ट्स ऑफ द कैंडल। राइट, सो नाउ जस्ट ऑब्जर्व दिस। ओके, तो एक तो कैंडलस्टिक्स प्लॉट करने का फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि जो चार्ट की विजुअल अपील है, जो आप जब भी चार्ट्स को देखते हो, तो कैंडलस्टिक्स एक चार्ट की विजुअल अपील है, वो बढ़ाता है। वो इट गिव्स यू अ बेटर डिसीजन मेकिंग। आपका डिसीजन मेकिंग, आपका जब भी आप प्राइस देखते हो, तो कैंडलस्टिक्स will show you, it is a better visual tool. Okay, it is a better visual tool as compared to bar charts or as compared to line charts. ठीक है, so it has a better visual appeal, right? तो राइट, सो हमने बात किया कैंडलस्टिक्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैंडल्स, टाइम फ्रेम ऑफ अ कैंडल, विजुअल अपील ऑफ द कैंडल, कैंडलस्टिक्स के अलग अलग पार्ट्स क्या होता है, खास करके रियल बॉडी,
upper shadows and lower shadows. So ये अब तक हमने we have covered so much in last 30 odd minutes. तो ये हमने cover किया है, right? So now let's go on. Now, तो candlesticks का अभी इसमें importance क्या है? Why do we use candlesticks in such a way? So now let us assume, देखो, let's say we are here in this particular. Now first thing we observe कि price has ये यहां से करीब लास्ट 2-3 महीने से prices started to come down. Okay, so now look at this phase. अभी ये phase देखो candle. Now just go back. Let's see. Let's put it this way. Right now, prices have been coming down. Now notice what happens. Look at in this phase. काफी सारी रेड कैंडल्स थी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो लाल कलर की कैंडल है उसकी मात्रा ज्यादा है. ओवर अ पीरियड यहाँ पे एक बैलेंस हुआ है. एंड सी द नंबर ऑफ ग्रीन कैंडल्स. देखिए यहाँ पर ये फेज में, लुक एट, जस्ट ऑब्जर्व दिस. इन दिस 15-20 days, देखिए यू कैन सी डिस्टिंक्टली, आप ये देख सकते हो कि हर एक कलर की मात्रा, कैंडल, ग्रीन कलर कैंडल्स वो ज्यादा हो रहे हैं एज कंपेयर टू रेड कलर्ड कैंडल्स. नाउ व्हाई डज दिस हैपन? Okay, see this. So now you can be reasonably sure that prices, they have stopped going down. यहां से अभी सपोर्ट जोन है, यहाँ पे they have stopped going down. Okay, what has happened? It has stopped going down. So candlesticks, what they show you is, it is an excellent tool for what we call as a change in सेंटिमेंट, राइट? तो कैंडलस्टिक्स ये कहता है कि कैंडलस्टिक्स की जो फिलोसॉफी है वो ये कहता है कि मार्केट्स में दो प्रकार के प्लेयर्स होते हैं, तेजी वाले और मंदी वाले. तो तेजी वाले और मंदी वाले के दोनों के बीच में एक कशमकश चलती रहती है, दोनों के बीच में एक झगड़ा चलता रहता है, दोनों के बीच में फाइटिंग चलती रहती है. और फाइटिंग किस बात पे है? टू कॉन्कर ईच अदर्स टेरिटरी. जो एक दूसरे की जो विरासत है या एक दूसरे की जो जगह है, वो वहां पे एक दूसरे को पुश करते हैं. हमारे इधर जैसे पॉलिटिशियन करते हैं ना, एक दूसरे की टांग खींचने का काम. तो दैट इज द वेरी सिमिलर थिंग. तो मार्केट में एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, कोई भी एक टाइम फ्रेम पे, यू विल सी दिस फाइटिंग दैट इज गोइंग ऑन. सो जो तेजी वाले होते हैं वो क्या चाहता है कि मैं जितना भी हो सके मैं टेरिटरी लेता जाऊं. तो कभी कभार क्या होता है कि तेजी वाले का बोलबाला होता है, प्राइस गोज अप. फिर क्या होता है, मंदी वाले आते हैं, देन दे ट्राई टू पुश द प्राइस डाउन. अगेन फिर से तेजी वाले आते हैं, देन दे ट्राई टू पुश द प्राइस अप. तो ये कश्मकश है ना, ये चलती रहती है. तो एज एन एनालिस्ट, हम न तो तेजी वाले हैं, हम न तो हम मंदी वाले हैं. हम तो सिर्फ ये देखना है कि भैया किसका पलड़ा भारी हो रहा है. कि अगर तेजी वाले का पलड़ा भारी हो रहा है तो मुझे वो स्टॉक खरीदना है. अगर मंदी वाले का पलड़ा भारी है तो शायद मैं उसको शॉर्ट करूं, या तो फिर मैं उसको बाय नहीं करता हूं. तो कैंडलस्टिक्स, इट्स अ ब्यूटीफुल इंडिकेटर ऑफ अ चेंज इन सेंटिमेंट. तो कभी भी आप कोई चार्ट देखते हो जो रादर लो प्राइस एरिया में, लो प्राइस मतलब क्या, काफी समय से नीचे आ रहा है. ओके, तो उसमें क्या आपको ये ट्रांजिशन दिखता है? डू यू सी दिस ट्रांजिशन from red candles to green candles? Okay, that is very very important. You keep on observing it.
सडनली यू विल रियलाइज, एक बार जब भी आप लगातार स्टॉक को आपको जब भी स्टॉक को आप रेगुलरली ट्रैक करते हो, राइट? सो व्हाट वी से दैट वी ट्रैक द प्राइस। मैं ये स्टॉक को कंटिन्यूअसली ट्रैक करता हूं, मैं ये स्टॉक को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता हूं। तो जब भी आप कोई स्टॉक को मॉनिटर करते हो, देन यू विल सी दिस चेंज इन ट्रांजिशन, राइट? यू विल सी स्लो, सी नाउ something has happened. ये बड़ी green candle आई, now this should warn you of something big is likely to happen. Okay, यहाँ पे तेजी वालों का पलड़ा भारी हो रहा है, और शायद यहां से most probably this price now wants to go up. Okay, you can make out simply by change in sentiment. This is what the key is. This is what, okay, this is what Nissan says. Nissan उसकी किताब में ये कहता है कि candlesticks, they are a tool to identify, monitor a change in sentiment. Okay, change in sentiment, very very important. जब भी आप कोई भी स्टॉक का चेंज इन सेंटिमेंट स्लोली ग्रेजुअली, देखो तेजी वाले है ना, इमीडिएटली पोजीशन नहीं बना सकते, इट टेक्स टाइम। और सोचो आप एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हो, और आपको ये पर्टिकुलर स्टॉक के जो है, आपको बहुत सारे शेयर्स लेने हैं, 2 3 4 5 लाख शेयर लेने हैं, तो आप एक दिन में नहीं ले पाओगे इसको। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक ही दिन में लेने का अगर कोशिश किया, तो आप ही भाव बढ़ा दोगे। सो दिस इज अ चेंज इन सेंटिमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू सी दिस हैपनिंग, आप लगातार रेपिटेटिव मार्केट बिहेवियर, you will see this happening again and again, again and again, again and again, right? So then slowly, and this is a change in sentiment. So let's move a little bit. See, now it is going up. See, now देखो लगातार हरी कैंडल्स आ रही है, कंटिन्यूअसली ग्रीन कैंडल्स आर अपीयरिंग। नाउ द प्राइस वांट्स टू गो अप, एक के बाद एक रेजिस्टेंस लेवल, रेजिस्टेंस जोन ये स्टॉक ब्रेक कर रहा है, इट वांट्स टू गो हायर। ओके, स्मॉल शॉर्ट टर्म करेक्शन, अगेन अ लॉन्ग ग्रीन कैंडल। Okay, so candlesticks, this all these candlesticks, they are filled with different type of patterns. That is the key. Let's look at another example. There's one particular stock that I like. I'll just show this to you. Okay. I will show you what happens when there is a change in sentiment. Okay. A gradual change in the sentiment. See, now look at this Maruti. It is in a low price area. Low price मतलब एरिया मतलब क्या? कुछ समय से प्राइस नीचे आ रहा है. Now see this again. Look at this last 8-10 दिन का प्राइसेस देखो, from year to year. देखो लगातार prices are coming down, 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 and lot of green candles are appearing. देखिए 1 2 3. Okay, see this green, or see where is the close. देखो ये ग्रीन कैंडल्स के का क्लोज किधर है? हाई के करीब है ना, दे आर नियर टू द हाइज। ओके, सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग? द ऑब्वियस the obvious conclusion of this is that buyers are getting interested in this stock. It is at a low price area, and in which area? Where there is support. Okay, we'll talk more about this. So Maruti at this point, it is just showing you change in transition, change in uh, uh, the change in the psychology of the buyers and sellers. Now, what is happening? Buyers are coming into play. They want to push the prices higher. Okay, that's it. Okay, so this is what is meant by a change in sentiment. अगर जब भी आप कोई भी चार्ट ओपन करते हो, let's see, I have this list. Whenever you look at this, okay. Now let's see. Take a look at another example. हमारा सबका फेवरेट HDFC बैंक. Now see, there is no change in now prices at a low price area. जो प्राइस काफी समय से नीचे आ रहा है, maybe I am considering to buy this. It is in a support zone, important support zone, but
आर वी सीइंग अ ट्रांजिशन? क्या हम ट्रांजिशन अभी तक इसमें देख रहे हैं? आई डोंट थिंक सो. ओके, राइट. सो कंपेयर मारुति एंड कंपेयर एच डी एफ सी बैंक. लेट्स, चलो यहाँ पे हम मारुति डालते हैं. Now look at, we'll just remove this. Now just don't look any, just look at the transition. देखो, the change in sentiment, right? The change in, देखिए कितनी सारी green candles आई है. HDFC बैंक में अभी तक है? No, it is not there. So what we will do? We can put this in wait and watch mode. This is how we first initial, जब भी आप charts देखते हो, first thing we want to see is a change in sentiment. Okay, so राइट. सो दिस इज, ये कैंडल्स आपका कोई भी इंडिकेटर्स के पहले, बिफोर indicators, before moving averages, you will see candlesticks giving you this change in sentiment indicator. Okay, now, okay, candlesticks ka, it will show you a change in sentiment, but candlesticks by itself is not useful. Okay, limited usefulness. It has to be looked. So a candlestick has to be looked एंड कंपेयर्ड. उसको कैंडल स्टिक्स, आज की कैंडल स्टिक को हम अगले कुछ दिनों की कैंडल से हम कंपेयर करते हैं, राइट. सो एक ये आप सिर्फ अगर एक ही पैटर्न देखते हो, देन इट विल नॉट गिव यू कंप्लीट आइडिया ऑफ द अंडरलाइंग पिक्चर. सो स्टीव निसन क्या कहता है कि कैंडल स्टिक्स को सराउंडिंग कैंडल्स के साथ कंपेयर करो. लुक एट सराउंडिंग कैंडल्स. ओके, सराउंडिंग मतलब लास्ट 8, 6, 8 दिन, 10 दिन के कैंडल्स के हिसाब से आप इसको कंपेयर करो. सो एंड एक बार आपने कैंडल स्टिक देखा, देन यू हैव टू लुक एट व्हाट इज द अंडरलाइंग पैटर्न्स दैट आर बीइंग शोन. ओके, तो कैंडल स्टिक्स में काफी सारी पैटर्न है. तो ऐसा कहते हैं कि कैंडल स्टिक्स में एवरी चार्ट टेल्स यू अ स्टोरी. ओके, हर हर कैंडलस्टिक्स के पीछे आपको दिन में क्या हुआ, इट टेल्स यू अ स्टोरी, राइट. सो नाउ देयर आर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स. सो वी हैव single candlestick pattern. Just change. Okay, then you have dual candlestick patterns, and at an advanced level you can have multiple candlestick patterns. Now, तो पहले हमने दो ही कैंडलस्टिक्स के बारे में अब तक तो बात किया है, ग्रीन और रेड. ओके, नाउ जैसे आप कैंडलस्टिक्स को देखते हो, देन you also see how the real body of the candle और उसका relationship with the shadows. Okay, so you can have a pattern or a candlestick like this. Okay, either it can be colored green, either it can be colored green or it can be colored red. अभी
this pattern depending where it is occurring. Okay, supposing अभी मान लीजिए कुछ समय के से प्राइस नीचे आ रहा है and then you see this type of a pattern. तो this is called as a hammer. इसको क्या कहते हैं? हैमर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न. इट इज कॉल्ड एज अ हैमर. तो हैमर में क्या होता है? हैमर में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो लोअर शैडो है, ओके, द लोअर शैडो, ये कम से कम रियल बॉडी से एटलीस्ट ट्वाइस द साइज ऑफ द रियल बॉडी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज कॉल्ड एज अ रिवर्सल पैटर्न. ओके, तो रिवर्सल पैटर्न का मतलब क्या होता है? कैंडलस्टिक्स इट टॉक्स अबाउट रिवर्सल पैटर्न, और उसमें काफी सारी कंटिन्यूएशन पैटर्न भी है. ओरिजिनल स्टीव निसन की किताब में probably more than 100 patterns have been defined. Okay, but we will only look at a handful of them. And the most important pattern is the hammer. Okay, so what is a hammer? It is a reversal pattern. Reversal pattern का मतलब क्या होता है? कि कुछ समय से प्राइस नीचे आ रहा है, फिर then you see a candle with a long lower shadow. It is important that there is a decline. So this is called as a, so these are called as reversal patterns, right? तो reversal pattern मतलब क्या है? कि कुछ समय के से लिए भाव नीचे आ रहा है and you see a pattern like a hammer. Okay, there are other patterns also. So they are called as bullish reversal. Bullish reversal. It is a proper noun. मतलब ये तेजी का संकेत है. Bullish reversal pattern. It is called as a bullish reversal. तो इसका ऑपोजिट क्या हो गया? बेरिश रिवर्सल. बेरिश रिवर्सल में क्या होता है? प्राइस इज गोइंग अप, देन यू सी अ पैटर्न. इसको कहते हैं हैंगिंग मैन. ये प्रॉपर नाउन्स है. यू विल हैव टू, आपको रट्टा मारना पड़ेगा एंड यू शुड हैव द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज दिस. ओके, इट इज कॉल्ड एज अ हैंगिंग मैन. ओके, यू हैव टू, इसको देखो, यू शुड रिकॉग्नाइज, राइट? तो ये, इसको यू हैव टू मेमोराइज दिस. आपको ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, इसको जुबानी याद करना पड़ेगा, और आपको ये पैटर्न समय पे पहचाननी पड़ेगी टू 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 हैव एन इफेक्ट. ओके, सो बुलिश रिवर्सल पैटर्न, हैंगिंग मैन. नाउ इफ सो इंस्टेड ऑफ अ रिवर्सल हैमर, अगर उल्टा हैमर, ओके, तो इसको कहते हैं इन्वर्टेड हैमर. ओके, और सेम पैटर्न, if this is the pattern, then it is called as a shooting star. Okay, very very important. Okay, तो ये पहला संकेत, काफी टाइम ये पहला संकेत देता है कि मे बी प्राइसेस आर लाइकली टू रिवर्स. काफी टाइम, कुछ समय से प्राइसेस नीचे आ रहा है, इंडिकेटर्स वगैरह आपका ओवरसोल्ड जोन में है. ओके, देन सडनली यू फाइंड दैट दिस हैमर. आई लव हैमर्स. ओके, अगर हैमर आता है तो मैं खास करके ध्यान देता हूं. अच्छा, एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात कैंडलस्टिक्स के बारे में, कि अगर आपको पैटर्न दिखती है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि प्राइस इमीडिएटली रिवर्स करेगा. इट इज नॉट नेसेसरी. इट इज नॉट नेसेसरी दैट इमीडिएटली द प्राइसेस विल रिवर्स. समटाइम्स देयर कैन बी अ ट्रांजिशन. ओके, पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, पैटर्न का लोकेशन, जिसे निसन कहता है द कॉन्टेक्स्ट इन विच द पैटर्न इज अपीयरिंग. ओके, सो नाउ लेट अस लुक एट एन एग्जांपल. ये है हमारा फेवरेट मारुति. दिस इज अ डेली चार्ट. ओके, नाउ दिस इज, सी,
prices are coming down, okay, and you see a hammer like pattern, see this one, and then what happens, price goes up, okay, this is also another pattern, okay. uh, this is a hammer, see now what happens, अभी hammer का मतलब क्या होता है, see अगर आप ये दिन पे, let's put it, ये दिन पे अगर आप जाते हो, व्हाट यू विल सी इज प्राइसेस कुछ दिनों से नीचे आ रहे हैं, देन सडनली बायर्स कम, prices they are pushed down and they recover during the course of the day. This is a hammer. अभी हैमर कहां पे होना चाहिए, एक तो कुछ दिनों प्राइस नीचे आ रहा है, कुछ दिनों से नीचे आ रहा है, एंड देन देयर इज अ बाउंस फ्रॉम द लोज. अगर ये आपको सपोर्ट लेवल पे दिखता है, इफ यू सी दिस एट अ सपोर्ट लेवल, इट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट. सी ये सेम पैटर्न इट हैपेंड इन निफ्टी, कुछ दिनों पहले की बात है. और उसके बाद क्या हुआ, देखो 3-4 दिन पहले हैमर टाइप ऑफ अ पैटर्न हुआ था निफ्टी में. दिस वाज यहाँ पे देयर वाज दिस हैमर टाइप ऑफ अ पैटर्न विथ अ लॉन्ग लोअर शेडो. इट हैपेंड इन एन एरिया ऑफ सपोर्ट, एंड व्हाट हैपेंड, ये जो डिक्लाइन है इट गॉट अरेस्टेड, prices are not moving higher. But now the question is, are you seeing this change in sentiment? See, from here to here, see the number of green candles, एक दो तीन चार, ओके, लास्ट 6 दिन में 4 ग्रीन कैंडल्स है और 2 रेड कैंडल्स है. सो नाउ मार्केट्स दे आर नॉट विलिंग टू गो डाउन, राइट. आरबीआई की पॉलिसी आई, आरबीआई ने बोला सीआरआर बढ़ा देंगे, ओके, मार्केट थोड़ा नीचे आया, संभल गया, ओके. इन्फ्लेशन के नंबर्स आए, इन्फ्लेशन के नंबर्स में भाई 5.4 का इन्फ्लेशन आया है, तो अभी शायद और इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना है. बट इज द मार्केट गोइंग डाउन? नो, द फॉल हैज बीन arrested. So now the probability is that Nifty should go up in a couple of days. So candlesticks, it is showing you a change in sentiment. It is showing you a change in sentiment, but it is still we have to wait for some confirmation. That is point number one. There is also another pattern that is happening, जो मैं आपको कुछ समय के बाद बताऊंगा. Okay. So we have candlesticks, different types of patterns. Okay. So, right, see. So we have a long lower shadow, a long upper shadow, a hammer, okay, inverted hammer, and so on. Now we also have a long green bullish candle, another very important pattern. देखिए, अगर आप बिल्कुल नौ सीखे हो, तो my suggestion to you is look at hammers and look at long red और green candles. So long red और green candles हमारी बाजू में exactly open और open low same होते हैं, but we don't see हमारी बाजू, we see long green candles. See, I'll also tell you why. See, now, see, look at this candle here. Now, this candle was a long red candle. Okay? It was a long red candle. Prices opened at the high and it closed at the low. कुछ दिनों के बाद prices came down lower. Okay? Right? Long green candle. देखिए, आज long green candle किसमें हुआ है? Let's say, for example, we have this beautiful long green candle in AU Bank, right? AU Bank, see, this is, देखो, अगले कुछ दिनों की कैंडल्स में क्या था? स्मॉल रियल बॉडीज. नाउ व्हाट इज हैपनिंग टुडे? दिस इज
a long green candle. So what has the so आज buyers ने क्या किया है? What have they done? Buyers ने क्या किया है? Buyers ने पूरे दिन में right from now let's go to a 5-minute chart. Let's go to an intraday chart in AU Bank and let's okay. So the market starts here 9:15. So what did the buyers do? Buyers right from the word go 9:15 से 3:30 बजे तक continuously छोटा छोटा price में okay price comes down a little bit, right? It is pushed higher, फिर नीचे आया, was pushed higher. Finally at the close buyers ने अपना मकाम छोड़ा नहीं, they took the price and it closed at the top end of the range. So why is this happening? ये क्यों हो रहा है? Why is it that the buyers are so aggressive today? Okay, because most probably what they are anticipating or what they are expecting is that we could be seeing the price move higher. Okay, so candlesticks, it shows you a change in sentiment, but what candlestick does not show you is how far the price will go. So uske liye we still have to work with Western methods. Okay, so now, okay, so these are candlesticks with a long real body. See, this was almost a near hammer. Okay, prices continued down and there was a counter attack. Bulls attacked this. So whenever you see a long, when you see a long range candle, okay, moving out of a consolidation, price consolidation के बाहर जाता है, okay, expect the prices to move higher. Okay, that is what the general expectation is. कि आप उस price को expect the prices to move higher. Okay, see. Another example of what similar thing happened was in Bhel. So today morning we had this call in Bhel where this was recommended as a buy, and this is a long green candle. It has closed at the high. It is likely हो सकता है कि शायद एक आध दिन के लिए प्राइस थोड़ा करेक्शन करके नीचे आए. Okay, हो सकता है, but eventually this price is in a strong trend and it wants to go higher. These are long green candles. They are long green. They are not exactly marubozus. Marubozus में क्या होता है कि प्राइस बिल्कुल लो पे ओपन होता है and it closes at the high. Okay. Modern day software, they can also identify. So maybe I'm using TradingView. So it can also identify patterns, automated identification of patterns, but still you have to look at the context in which the pattern is appearing. See, another great context of a wide range bar is in Vale, and it happened here. There was prices actually moved out of a clear resistance area, long green candle, increase in volume, slight correction, and the price went higher. Okay, right? So this is your long green candles, hammers. Okay, now there are certain indecisive candles. Okay, so indecisive candles में खास करके क्या आता है? You have stars, small range candles. Okay, काफी समय से प्राइस में कुछ नहीं हो रहा है. Okay, so you have, these are called as stars. They can be red or green. So you can have several bunching of stars. Okay, so it means that the volatility is low. Buyers or sellers, they are not aggressive enough. So classic example would be Axis Bank. See, Axis Bank में in this phase, okay, we had this several small candles. Okay, see here. Okay, so I mean, you don't want to be actually, if you are a directional player, अगर आपको direction play करना है, you don't want to be getting into this zone. Why? Because either way you may not have a fast movement. So I am somebody like me. I am an out and out directional player. Okay. Now see what is happening. Now can you tell? Now see what is happening. Do you see this gradual change in happening? This is what is happening. See, three
Three consecutive green candles, they are also called as, they don't exactly qualify for three white soldiers, but there is a definite change in sentiment that is happening. Okay, काफी सारी red candles के बाद you have some sort of a movement up higher. So maybe look at Axis Bank and the context. Context, what is the context? Context is that the price is at a rising trend line. If you don't see a bullish pattern in the context, then ignore the trade. See, candlesticks is not a mechanical trading system, guys. मैं आपको ये बताता हूं कि कैंडलस्टिक्स का पैटर्न दिखा उसका मतलब ट्रेड लेना जरूरी नहीं है. You have to look at the candlestick pattern within the context of the price action and the context of the trend. You also have to look at surrounding candles. ये बहुत बहुत ही important है. And this is what the crux of price action is. Price action is not only identifying patterns. Okay, so you have small real bodies, stars. Okay, then you have a doji. Doji में क्या होता है? Doji में open and close, they are almost at same levels. You can have different type of dojis, right? Small doji hota hai, so it is called as a common doji. कभी कभार एक range में, okay, price is in a range and you see several dojis candles. Okay, so they are called as common dojis. Nissan बोलता है कि ये doji को ignore करो. तो कौन सा doji important है? वो doji important है जहां पर price ने काफी तेजी से छलांग लगाई है और अगर उसके बाद डोजी आता है. दिस इज एन इंपॉर्टेंट डोजी. आइदर इट कैन बी अ ग्रेवस्टोन डोजी कि जहां पे प्राइसेस दे ओपन at the low, it makes a high and then it closes at the low. So this is called as a gravestone doji. Then you have a butterfly doji where prices they open at the high, after a steep decline. So these dojis are important. Okay, another doji pattern is what we call as a high wave candle. तो high wave candle में कभी कभार एक बहुत ही लंबा रेंज होता है between the real body and the upper and the lower shadow. It's a very long candle. So this indicates indecision. काफी time prices after this type of pattern can go in a range. Okay, every candlestick tells you a story. So now let's try and locate uh, these couple of patterns, right? So these are small uh, one bar, single bar patterns. Then candlesticks also has a two candlestick or dual candlestick pattern. So dual candlestick pattern में क्या होता है? Dual candlestick pattern में what you have is two candlesticks behaving in a particular way. Okay, अगर वो conditions true है, then we give it name as a pattern. Okay, तो दो या तो फिर दो से ज्यादा मल्टीपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स भी होते हैं जहाँ पे हम मॉर्निंग स्टार्स, इवनिंग स्टार जैसी पैटर्न्स है. तो नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू बार पैटर्न्स, मतलब दो कैंडलस्टिक पैटर्न्स बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे. तो फर्स्ट वन इज माय पर्सनल फेवरेट इज द बुलिश एनगल्फिंग. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न. बुलिश एनगल्फिंग, राइट? तो इसमें क्या होता है? यू हैव अ रेड कैंडल. A red candle is followed by a green candle और ये ग्रीन कैंडल जो है वो अगले दिन के रियल बॉडी को पूरी तरह निगल जाता है. ओके, इट इज कॉल्ड एज अ बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न. ओके, वेरी वेरी पावरफुल पैटर्न. ओके, इन द राइट कॉन्टेक्स्ट. समटाइम्स, काफी बार व्हाट यू विल सी इज एक ग्रीन कैंडल जो है इट विल एनगल्फ रियल बॉडीज ऑफ सेवरल कैंडल्स. बहुत सारी कैंडल्स के रियल बॉडी को एनगल्फ कर लेता है. तो इफ यू सी दिस सॉर्ट ऑफ अ पैटर्न, तो इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश engulfing pattern. See, now I'll just explain. I'll just show this on a chart. ये आज हुआ है. There is one stock that I am following, that is SJS. SJS Enterprise.
See this long green candle. ये काफी सी it is engulfing bullish candles of last several days. देखो कितना, एक दो तीन चार छोटे छोटी कैंडल्स को very long green candle, and look at the volume. Something is definitely this is happening now. Bullish engulfing is the pattern in the context. The answer is yes. Why? Because we have a very strong trend line coming in. Price is taking place, support of the trend line. This is a nice prior consolidation area, what is called as a demand zone, which Dheeraj will take you through that. So this is an example of a very, very powerful pattern. This very strong trend, a very nice bullish engulfing pattern, and bingo. And this is the trade that you are going to look at. Now, अभी प्रश्न ये उठता है कि क्या ये 100% गारंटीड ट्रेड है? मार्केट्स में कुछ भी गारंटीड नहीं होता है, राइट? नथिंग इज गारंटीड इन द मार्केट, सो एवरीथिंग इज प्रोबेबिलिटीज. तो प्रोबेबिलिटीज का मतलब क्या होता है? तो 100% सर्टेनिटी क्यों नहीं? बिकॉज देयर इज ऑलवेज, हमेशा एक चांस होता है कि देयर कैन समथिंग कैन गो रॉन्ग, अ न्यू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कैन कम इन which can distort the available information. So always manage your risk. तो probability, high probability का मतलब क्या होता है? High probability का मतलब ये होता है कि अगर आप similar type of trades लेते हो, right? So let's say similar type of, उसी प्रकार की, ओके okay? अगर similar type of trade लेते हो, then over a large sample size, मतलब मान लीजिए आपने continuously 30 ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए, 30 बुलिश एनगल्फिंग के ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए, ओके, 30 ट्रेड्स, उसमें से कुछ सही जाएंगे, कुछ गलत जाएंगे, बट इट इज नॉट 100% गारंटीड कि ऑल 30 विल वर्क. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ये चीज समझ लो. दिस इज द मीनिंग ऑफ हाई प्रोबेबिलिटी. हमेशा हाई प्रोबेबिलिटी is to be considered. उसको एक large sample size, let's say 20 trades, 30 trades, काफी रिस्क मैनेजमेंट की किताब ये बोलती है कि आपका कोई भी मेथोडोलॉजी आप यूज करते हो, then it has to be over a period of at least 30 trades. Okay, modern लोग ये कहते हैं कि at least 20 trades. Personally, I believe that your performance has to be measured over a sample size of 30 trades, because statistically 30 is a reasonably good number to measure any event occurrence का जो बात करते हैं, तो 30 इज अ रीजनेबली गुड नंबर. तो अगर एक ट्रेड गलत जाता है, उसका मतलब ये नहीं कि आप सिस्टम को अबैंडन कर दो. यू हैव टू, जो भी आपका मेथोडोलॉजी है वो कितनी पावरफुल है, मेजर इट ओवर अ पीरियड ऑफ 20 और 30 ट्रेड्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग. हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग में मतलब ये नहीं होता है कि 100% गारंटीड ट्रेड. ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न. ओके, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का एक स्लाइड, इसका जो ऑपोजिट है, इट इज कॉल्ड एज अ बेरिश एनगल्फिंग. तो बेरिश एनगल्फिंग में क्या होता है? प्राइस हैज बीन गोइंग अप फॉर सम टाइम, फिर देन यू सी अ ग्रीन कैंडल, देन यू हैव अ रेड कैंडल जो अगले दिन के ग्रीन कैंडल को पूरी तरह एनगल्फ कर लेता है, वो पूरी तरह निकल जाता है. इट इज कॉल्ड एज अ बेरिश एनगल्फिंग. ओके, तो ये पैटर्न इंपॉर्टेंट है जब भी आप, मान लीजिए इन प्राइस इज हियर, एंड अगर आपको ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल वगैरह दिखती है एट अ प्रायर रेजिस्टेंस एरिया, या तो फिर आप ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे अगर ये पैटर्न दिखती है, मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है, या तो फिर कॉन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर्स, यू कैन आल्सो यूज फिब रिट्रेसमेंट्स, टारगेट जोन्स पे अगर ये पैटर्न दिखती है, देन इट गेन्स इंपॉर्टेंस. बुलिश एनगल्फिंग एंड बेरिश एनगल्फिंग. Okay, then you also have other patterns which we call as okay, so a bullish
पियर्सिंग पैटर्न, तो बुलिश पियर्सिंग पैटर्न में क्या होता है, एटलीस्ट हाफ वे, ओके, तो रियल बॉडी का है, उसमें कम से कम अगले दिन के रियल बॉडी के उसको पूरी तरह निगलता नहीं है, लेकिन कम से कम लेट इज हाफ वे थ्रू, सो दैट इज कॉल्ड एज अ बुलिश पियर्सिंग पैटर्न। बुलिश पियर्सिंग पैटर्न का जो ऑपोजिट है, वी कॉल दैट एज a bearish dark cloud cover. So this is called as a bearish dark cloud cover. So again, this is a reversal pattern. Usually what we do is that अगर पैटर्न का लो ब्रेक करता है, तो then we try and sell it for at least a brief short term movement. So essentially candlesticks, they project movement over next couple of candlesticks. मतलब डेली पे है तो कुछ दिनों के लिए, एक दिन हो सकता है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हो सकते हैं। अगर आप modern day जो authors है, now they use candlesticks extensively with different type of pattern recognition, कि अगर आप harmonic patterns देखते हो, then AB is equal to CD में अगर आपको you see a bullish candlestick appearing in the zone, it is considered to be a valid completion of that harmonic pattern. काफी सारी harmonic pattern है, but we are not talking about harmonic pattern. Same thing is with Elliott wave counts. अगर आपका end of the wave में आपको bearish pattern दिखती है, it confirms that that the count is most likely to result in a reversal. तो वो reversal हो सकता है. So candlesticks as such, इस प्रकार से they are very versatile tools, but they have to be used in the right context. तो ये कुछ पैटर्न्स है, खास करके इंपॉर्टेंट बुलिश एनगल्फिंग, पियर्सिंग। उसके बाद बहुत सी अलग पैटर्न्स है, हेरमी है, 3 इनसाइड आउट, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स। तो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स में जो बहुत ज्यादा मुझे पसंद है, वो तो है एक मॉर्निंग स्टार्स और इवनिंग स्टार्स। तो मॉर्निंग स्टार्स में क्या होता है कि प्राइस हैज बीन कमिंग डाउन फॉर सम टाइम, एंड देन यू सी a red candle, okay, it is followed by a small bodied candle that gaps lower, okay, और उसके बाद you have a green candle. So you have a green candle. Sometimes काफी कभी कभी ऐसा भी होता है कि you may have multiple small bodied candles. Okay, 2-3 आ जाते हैं, and then you have this long green candle. So this is combination of what we call as a morning star. Morning star में अगर star की जगह पे doji है, we call it as a morning doji star. इसका जो bearish version है, उसे हम कहते हैं evening star. So price is going up for some time. You have this long green candle. उसके बाद एक छोटी स्मॉल बॉडी कैंडल्स आती है, एक या दो आती है, कभी कभार डोजी भी होती है, एंड देन यू हैव राइट. So these are evening stars. This pattern recently happened in uh, Gale. Price coming down, almost a harmonic AB is equal to CD. Transition, almost a bullish engulfing, and the price goes up. Now overall, now look at the context in which the pattern is appearing. Okay, we'll just take a couple of more examples. See, price what was at a prior swing high,
we had this a reasonably good trend line. So it was in the context prices were coming down, and what we now have is a move higher. Now, basically, this has started to move higher, so we could be seeing a move higher to around maybe 125 or higher. If you look at the longer term trend, prices are breaking out of a major consolidation. Okay, see, this is a huge consolidation. Prices are just moving out. Okay. One more thing I want to I'll just come to that point soon sometime, right? So we are in the context, we are in the right phase for gas authority likely to see higher levels. Okay, so let's look at another one. Rasim, another of one of my favorite stocks. We will try to identify patterns as they come along. This homework has been done. See, this is a daily. Right, this is a classic morning star. See, now see the transition. Price comes down, support area पे आता है. You have a bullish hammer. So buyers are coming into play. This decline is being arrested. Two small, insignificant red candles, which is followed by a strong green candle. A very high probability trade, if you ask me. Why? Because let's say we can put a stop just below the support, let's say 1780, and we can look at 1870 as a possible target. Okay. Now we only have around 5 or 6 days for the expiry of this current series. But if you can now, if towards the end of the expiry, if you can pick out such candlestick patterns, okay, let's say a week, 10 days before the end of the expiry, uh, you can create some great option strategies. If you like to create spreads, कि अगर आप एक bullish call spread अगर आप trade करते हो तो, और या तो फिर ratio spread करते हो, so these candlesticks patterns can be used to create this type of spreads, provided the option is liquid. Uh, so this is how you have to look at your a lot of charts. See, Dixon is also something that we picked out yesterday. Again, price at a support, a very a shallow decline coming to the support, and this is again a bullish. See, this is a bullish. This is bullish piercing. देखो ये वाला. This is a bullish piercing. ये I just hide this, but I'll remove it. This is a bullish piercing. Here, see, this is a bullish piercing pattern, and this goes higher. Now look at the context in which the in which the pattern is appearing. See, we broke out of the highs, very high volumes. This announcement came after the government put a ban on imported laptops and so on. Okay, so most probably what the market is expecting that Dixon will benefit from it. Anyways, so these are some of the contexts in which the patterns are to be taken. Right, so I'll just show you a last chart before we can move into a question and answer round. Okay, see, now this is Maruti. See, now the change in transition that I talked about, मैंने जो change in transition that I talked about, we are already at a major support. Okay, then what we have here is this, and this is a bullish engulfing. Okay, see, this is the bullish engulfing. Red candle that is engulfed completely by a green candle. So this is the bullish pattern. This ये जो है, this one,
ये 3 कैंडल का पैटर्न जो है, वन, okay, ये these 3 patterns, they are morning stars. So I can, if I can just pick this out. uh, See this. This is triple candlestick pattern. See, this is a morning star, morning doji star. If I don't know if you can see this properly. See, this is the morning star, the one here. Classic way in which price, ये जो है, this one here is a bullish morning star, right? So these are candlestick patterns. So uh, Manish, okay. you, So what we have done is that we have located the patterns. Now, how to follow best practices? Now, first is that if you are somebody who is a newcomer into the market, look at a limited number of stocks, right? Ideally, maybe 40 or 50. If you don't know which ones to look at Nifty 50 stocks. ये बहुत अच्छा आपको, believe me, you can make a living by only looking at Nifty 50 stocks. Okay, so start with that. Create a list of Nifty 50 stocks. Do your analysis every day. Try to identify patterns. Make notes of it, and then there will be a stage. एक stage ये आएगा जब भी आप रेगुलरली ये 30 या 50 स्टॉक जब भी आप प्लॉट करते हो ना, प्राइस आपको पूछेगा, अरे मुझे ऊपर जाना चाहिए क्या? then you will be able to pick it out, right? It can take some time, maybe I don't know, 4-6 महीना, 1 साल लग सकता है, but continuously monitor it, right? Look at 40-50 stocks and make your decision based on that. Okay, so Neeraj, I think we can have invite a question and answer round, whatever question uh, the listeners would have. yes, Right? Manish, can you hear my voice? Yes, I can hear your voice. Okay, great, great. So, okay. So, one screener. Now, of course, today you have covered some of the candlestick patterns, not all the patterns. Yeah. Any recommendation where one can go? I think it's widely available nowadays in the internet, right? And one question someone is asking about screener. How Okay. to, is there any screener that you can use to identify those patterns? You know? See, basically, you can use a screener or what we call as a scanner, and I think a lot of these softwares have it. So Mhm. you can now, if you use a screener for a lot of patterns, you are going to get a lot of charts. Okay, to monitor that. But again, at the same time, screener is helpful, but you have to understand that uh, you know candle in the right context. Okay, Mm. that is the key. So first, my suggestion to you is that before migrating to a screener, work with maybe 40 or 50 stocks over a period of 2 or 3 months. Familiarize yourself with these various patterns, and then go on to a screener rather than straight away jumping onto a screener and without the context of the trend. See, without context of the trend, on its own, candlesticks will have a rather poor probability. Now, this has been given by Greg Morris in his book on candlesticks. Again, Greg Morris is a contemporary of Nissan. He has done his own research on candles, and he has, sort of he has given a probability distribution of all these candlestick patterns. Similar thing has been done by a gentleman called Thomas Kutzkowski. Mhm. So both these people, I think, over a period, what I got from reading from their book is that they are emphasizing the fact that you have to look at the pattern in the context first, and then go in for a screener. Screener is good, but it will not substitute for uh, you know uh, looking the candle in the right context, because a screener will only identify the pattern. So
let's take a look at this Maruti again. I hope you can see my screen, right? See, this is a bullish engulfing pattern. A screener could show this to you as a bullish engulfing, but it may not be in the right context. Mm-hmm. Okay, see, this pattern went up and it failed. Why? Because maybe the market conditions were not right. The pattern, the price action was not at a proper support level. So, maybe that's the reason why, sometimes patterns fail because they may not be in the right context. Right. Okay. Correct. Avneet Kumar said there's a question. Should we read the 50 charts daily? Now, again, as a trader, morning before the market opens, one need to do his homework. It's not that during the market he's going to find trades and start trading. He'll have to do his homework. So, what is exactly is the process to start screening stock for the trade today? How many stocks ideally one should be trading? So any kind of filter? That is a question So, from see, Avneet basically, Kaur. okay, now what, uh, okay, you can see currently we are in a rather bullish trajectory, right? So, one thing हाँ जी. what you can do is that अच्छा you हम can लोग say, हिंदी में भी बात कर सकते हैं हाँ हाँ हाँ? ठीक है ठीक है ओके ओके हाँ सॉरी आई मीन आई जस्ट ओके तो इसमें क्या है कि वी आर जनरली वी आर इन अ स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी so the first filter that you can use is that you know at least have this basic condition where let's say a 50-day moving average is above a 200-day moving average. So moving average is something that we will touch tomorrow as such. So it will just give you a brief you know those stocks which are generally in an up trajectory. And once you find that prices they are coming down maybe down to a support level, then you see some bullish candlestick pattern, then you can act on it. But seriously, my contention is that uh, uh, I would suggest that look at least a large cap or slightly larger mid caps. Though at this stage, I would not recommend going in for micro caps or small caps because they can be very very volatile. So this is one filter that you can use. That maybe you can have a filter where you only want to look at stocks that have a market cap of let's say 50,000 crores, and in those stocks, 50-day moving average is about 200-day moving average. So it will cut down on your list. Maybe you can add one more filter to it that you can have let's say the average daily volumes should be maybe more than 5 lakhs. So at least your bid and ask will be reasonably narrow. So you can execute your trade in these stocks at a relatively better prices at a better pace, and even exit can also be uh, you know uh, uh, at better prices. Okay. Okay. ओके ओके गाइज अगर आपका कोई भी क्वेश्चंस हैं प्लीज फील फ्री गो अहेड टाइप योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स तो अगेन मनीष इज गोइंग टू टेक योर सेशन टुमारो सो अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं विद रिस्पेक्ट टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स किस तरीके से ट्रेड करना है कोई सेशन में आज आप समझ नहीं पाए पूरे आप चैट बॉक्स में जाके आप टाइप कर सकते हो सो मनीष इज गोइंग टू बी हियर फॉर अनदर 5-10 मिनट्स सो हम लोग क्लियरिफाई करेंगे सो रिकॉर्डिंग लिंक काफी लोगों ने पूछा है कि रिकॉर्डिंग लिंक राहुल कुमार जी हाँ रिकॉर्डिंग लिंक हम शेयर करेंगे इन 6 to 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रोग्राम सो क्योंकि हम लोग को पूरा का पूरा क्लीन करना पड़ता है पूरा रिकॉर्डिंग डाउनलोड करके सो इसको अपलोड करके हम लोग शेयर करेंगे आपका साथ सो कोई चिंता मत कीजिएगा काफी सारे लोगों ने पूछे हैं कि कंटेंट भी हम लोग शेयर करेंगे जो भी प्रेजेंटेशन में दिखाया गया है उसका पीडीएफ कॉपी आपको शेयर करेंगे वरुण ने पूछा है सर कुड यू सजेस्ट सम स्टॉक्स फॉर इंट्राडे मूवमेंट व्हिच आर फेमस फॉर वोलेटिलिटी so these are not recommendation these are some kind of intraday stocks okay Manish over to you ये question from Varun Shah Okay. Now for intraday, what you can do is that uh, look for again look for bullish patterns in the right context. Okay, now intraday, one thing very important is that what is the overall volatility during the course of the day. Okay, so let's if we just look at Nifty. Okay, what has happened is in last at least uh, maybe 8 to 10 days, the direction has gone missing. Okay, and you find that lot of stocks are just drifting. So you have to understand whether there is a clear direction during the course of the day, yes or no.
If the direction is there, then in which direction is it going to be, up or down? Uh, and See, usually what happens? Usually in intraday, if the market opens stronger, now I'll just share this thing. If the market opens stronger the next day, strong stocks will have at least an uh, a follow up price movement at least during first half an hour or 1 hour. So now let's put it this way. Let's say we have something like, let's say, L&T Finance. So L&T Finance has shown a green candle, okay, or for that matter, even Maruti or Pale. If tomorrow, okay, if tomorrow the index opens higher, you could see at least some sort of a follow up buying in these stocks. Okay, so but by itself, then you also need to go down to drill down to a lower time frame. Let's say I expect the markets to open higher tomorrow, then I also need to know that if I'm going to buy maybe L&T Finance, where is my stop going to be? Ideally, the stop has to be below a prior swing low. So, if market opens higher tomorrow, I will just buy maybe L&T just above 125, keep a stop below 124 and shoot for this as the target. Okay, 127, 127.35. That is the minimum target. Then how you manage your trade during the course of the day, again, that is a different challenge. So do your homework. That is the reason why I'm telling you that for intraday stocks, look at those candles that have given you a bullish pattern and those stocks that have given you a bearish pattern. So maybe something like, let's say, uh, Lalpat Labs. Lalpat Labs is basically, see, overall this is the trend trajectory that is directed down. If the market opens weak tomorrow, okay, and for that matter, just let's check what international indices are doing there. Okay, so Dow is just flat again. Nasdaq is just slightly higher. Now we don't know how the markets are going to open tomorrow, but you can get a reasonably good idea if you see before the market starts how are the international markets doing, what is the USD INR doing, and any major developments that have happened overnight. So if you can get a reasonably good idea whether the markets are going to open higher, stronger or weaker tomorrow, then you can do your homework and position yourself accordingly. Yes, Manish. Sorry, I was Yeah. in mute. Okay, okay, okay. So, काफी सारे लोगों ने क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं. There are questions on portfolio building के लिए, what kind of stocks to and second thing, what kind of stocks should be there in your portfolio, uh, consider in your portfolio, uh, and how probable or probability of the candlestick pattern with 15 minutes time frame for intraday trading. Okay, so ये है रवनीत तुलारी से कि 15 मिनट चार्ट में कितना प्रोबेबिलिटी है, और मतलब 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं क्या इंट्राडे टाइम See, ट्रेडिंग के लिए? okay, now you can use candlesticks on all time. That is point number one. If you are going to monitor a 15-minute time frame, at best, what you can do, and you are a strict intraday trader, if you are somebody who is trading Nifty, then it is, uh, uh, then probably you will not be able to trade more than one or two instruments. Okay, because every candlestick patterns will have its own flavors that will be there. So personally, and what Nissan says in his book is that he prefers it to be on the daily time frame. 15 minutes I could be a little bit too short in my opinion. I would say that look at 30 minutes, or maybe I would say look at 75 minutes. Why 75 minutes? Because 75-minute candle will distributes the day equally, at least in the Indian market context, right? So market opens at 9:15 in the morning and it ends at uh, uh, 3:30. So 75-minute candles will probably give you a nice little uh, perspective to the overall Yeah. market. So you can use 75 minutes as the higher time frame, and you can use 15 minutes as your lower time frame. So Yes. either you can go in the direction of a 75-minute chart to base your trades. So in the direction of the trend. So if you have a bearish pattern on the 75-minute, you can go move lower down to a 15-minute time frame and take a quick short trade.
But again, these are short-term, very short-term intraday patterns that you will see, and the moves probably you should be expecting is probably maybe 0.25% of the entry price. Correct. Yeah. There's a question from Rohan Raja. Log scale chart and linear. Like most of the charts are in the log scale and a linear scale. ये दोनों का फर्क क्या है? What Okay. is the difference between? Okay, I'll explain. Log scale charts are equal percentage moves, right? So now I have this. Let's pick out a chart that has given you a very sharp rally because you will understand it better. Okay, so I'm just picking out just out of memory. I'm just picking out this thing called Jupiter wagons. Okay, so now, now if I now these are equal percentage moves. Okay, so now you see if you see it on this scale, this this price has been scaled at 5 rupee increments. Sorry, 25 rupee increments, right? So 75, 100, 225, 250, and so on. So it has been scaled in 25 rupees increment. Now, if I change this to a logarithmic scale, okay, now equal percentage moves will be scaled equally. So your chart scale, so uh, the distance from let's say 10 equal percentage moves. So 100% of 10, let's say 20. So this will be Logarithmic. at equal increments. Okay. Now, most of the charting is we do it on linear scale, but there may be times when because of the price move. Okay, so now I'm just changing back to a regular this thing. It may not your logarithmic scale may work much better. Let's say if I am looking for some sort of a trend line breakdown, let's say if I am looking at this trend line as a as an exit point. Okay, let's say for example, now if I redraw this trend line on a logarithmic scale, I will have much steeper curve. See, this is your a normal. It has a much flatter curve. If I change this to a linear a log scale, it will have a much steeper curve. So uh, maybe see in something like let's say a stock that has not moved much over a period of let's say 1 year or so, you can still work with your normal your linear time scale. But in stocks that have seen a significant movement, you use a logarithmic uh, time. So most of the time, your linear scale works out to be the best. In certain cases where there has been a very sharp, a very prolonged move, you use a logarithmic scale. Okay, I hope it makes. I hope I'm Yeah, clear yeah. on this. Yes, I think that's it. There are so many questions actually. बहुत सारे questions हैं. And again, I would like to say that Manish will be back tomorrow again. And tomorrow, जो भी आपका मन में questions है, आज please write it down. Tomorrow हम लोग एक dedicated time 15-20 मिनट question answers में consolidated question answers, क्योंकि काल का पूरा sessions मनीष ही लेंगे, तो और एडवांस होगा, थोड़ा बहुत इंडिकेटर्स होगा, एंड वहां पे पूरा का पूरा ट्रेडिंग सिस्टम हम लोग डिस्कस करेंगे. तो जो भी क्वेश्चंस हैं, प्लीज पार्क योर क्वेश्चंस, नोट योर क्वेश्चंस डाउन, एंड कल हम लोग वो क्वेश्चंस एक कंसोलिडेटेड तरीके से हैंडल करेंगे. आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे फ्रॉम मनीष. थैंक यू सो मच मनीष. इट वाज अ लवली सेशन. द नेक्स्ट सेशन जो है ये मैं लेने वाला हूँ. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिमांड Okay, एंड guys. So ट्रेडिंग. yes. So yeah. So Neeraj and the Paytm team, thank you very much for this invite. And okay, so I hope you guys have enjoyed this, all the listeners out there, and I hope it helps you in your trading. So tomorrow also I'm going to be there. We are going to have a lot of fun tomorrow, and again it's going to be a content-heavy webinar, right? So there is going to be a lot of content. I hope I can make I can do justice to it because we are going to discuss too much. We are going to go into details of a trading system and designing a trading system and stuff like that. A relatively fairly advanced stuff that you can use in your day-to-day trading.
So please, everybody, call your friends, send them this link, and more the merrier. So thank you very much for your valuable time, everyone, and see you tomorrow. Bye, everyone. Good night. Thank you. Okay, see you tomorrow. Okay. Okay, thank you so much, Bye. Manish, Yeah. for a lovely session. Now, अभी मेरा टर्न है. काफी सारे लोग चैट बॉक्स में मैं देख रहा हूँ कि हिंदी में बोलिए. डेफिनेटली मैं हिंदी में बोलूंगा, और मेरा जो इंग्लिश होगा इतना मुश्किल नहीं होगा. अगर आपको इंग्लिश समझ में भी नहीं आते हैं, डोंट वरी, इट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल. या ओके. So first of all, thank you. So many questions that I can see how to trade, how to this thing. So the concept, मनीष ने एक concept बहुत importantly कहा है कि जो भी कैंडल स्टिक्स हम लोग का जो पैटर्न्स है हम लोग डिस्कस किया हो ना, वहां पे कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस कॉन्टेक्स्ट में. अगर कॉन्टेक्स्ट मिस हो गया, देन प्रोबेबली द पैटर्न जो कैंडल स्टिक है ये इतना काम नहीं करेगा और फेल हो जाएगा. सो कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉन्टेक्स्ट ओनली. ओके. तो मैं मेरा प्रेजेंटेशन शेयर कर लेता हूँ. आई एम गोइंग टू शेयर माय प्रेजेंटेशन. I'm sure you can see my screen. Can you give me a quick check, guys, all of you, if you can see my screen? फटाफट चैट बॉक्स में जाके टाइप कर दीजिए कि अगर आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहे हैं कि. ओके. ठीक है. तो नाउ अभी देखिए, कैंडलस्टिक चार्ट में काफी सारे लोगों ने पूछे हैं कि देखिए, देयर आर चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कैंडलस्टिक चार्ट में. एक होता है कि कलर. आपने देखा होगा कि जब मार्केट गिरते रहता है, जब मार्केट नीचे आता है, देन वहां पे कलर मोस्टली हम लोग क्या कलर देखते हैं? रेड कलर, है ना, जब मार्केट नीचे आते हैं. और जब मार्केट ऊपर जाते हैं, आपको किस तरीके का, किस रंग का कलर ज्यादा, कैंडल ज्यादा दिखाई देते हैं? ग्रीन कलर. सो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कलर ऑफ द कैंडल. ओके, दैट इज द पॉइंट नंबर वन. हम लोग ने ऑलरेडी. एंड देन वहां से हम लोग को मालूम चल जाता है कि मार्केट में प्रेशर, बुलिश प्रेशर है, बेरिश प्रेशर है, अपवर्ड प्रेशर है, डाउनवर्ड प्रेशर है. वो कलर ऑफ द कैंडल से मालूम होता है. नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द साइज ऑफ द कैंडल. वो कैंडल कितना बड़ा है. देयर आर लॉन्ग कैंडल. अब इस तरीके से सोचिए कि एक कैंडल का अंदर पावर होता है. मान लीजिए एक लंबा कैंडल, ए लॉन्ग कैंडल, जिसको हम एक्सटेंडेड रेंज कैंडल कहते हैं. इट्स ए बिग कैंडल, तो उसका अंदर ज्यादा पावर रहेगा. देन एक छोटा सा कैंडल, ओके, जिसको हम नैरो रेंज कैंडल कहता है, छोटा सा कैंडल, उसका अंदर इतना पावर नहीं रहेगा. इट्स कॉल्ड इनडिसिशन. नाउ ए ग्रीन लॉन्ग कैंडल, एक लंबा सा ग्रीन कैंडल है, इसका मतलब वहां पे बुलिश पावर ज्यादा है. देयर आर मोर बुलिश एनर्जी इन दैट कैंडल. और एक कैंडल रेड कैंडल है, लॉन्ग कैंडल है, उसका मतलब वहां पे बेरिश एनर्जी ज्यादा है. ठीक है. सो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द साइज ऑफ द कैंडल. यस, द कलर ऑफ द कैंडल एंड द साइज ऑफ द कैंडल. एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द शेप ऑफ द कैंडल. आप लोग ने पहला सेशन में देखे हैं कि विक्स, हैमर, मॉर्निंग स्टार, हैंगिंग मैन, अलग अलग तरीके का बॉडी होता है. बॉडी का ऊपर वीक होता है, बॉडी होता है, उसका नीचे वीक होते हैं. कोई कोई कैंडल का बहुत लंबा सा साइज होता है, लेकिन उसका बॉडी छोटा होता है कि नहीं? तो अलग अलग शेप का कैंडल होता है, ये भी मैटर करता है. क्योंकि देखिए, कैंडल इज नथिंग बट अ टसल बिटवीन द बुल्स एंड द बेयर्स, द बायर्स एंड द सेलर्स, द डिमांड एंड द सप्लाई. ठीक है. सो ये जो शेप होता है ना, उस दिन का, उस समय का पूरा स्टोरी कहता है. कौन कहता है? द शेप ऑफ द कैंडल. ठीक है. नाउ ये तीन चीजें हो गया, कलर, साइज, शेप. एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द लोकेशन ऑफ द कैंडल, कि इस कैंडल कहां पे लोकेट है. मान लीजिए अभी मॉर्निंग स्टार, हैंगिंग मैन और हैमर, वो कहां पे एग्जैक्टली है? तो कहना कॉन्टेक्स्ट. द कॉन्टेक्स्ट इज द लोकेशन वेयर एग्जैक्टली दिस कैंडल इज फॉर्म्ड. तो वहां से हम लोग क्या निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी. देखिए, अगेन, एज ए ट्रेडर आपको हमेशा ये देखना पड़ेगा कि आपका जो ट्रेड का प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. इसका मतलब आपका ट्रेड का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए ना. हमेशा हम लोग कहते हैं कि अगर
अब अच्छा क्वालिटी का ट्रेड लोगे, इफ यू टेक ए हाई क्वालिटी ट्रेड, अगर आप कम भी ट्रेड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन इफ यू ट्रेड फ्यूअर नंबर ऑफ ट्रेड्स बट द क्वालिटी ऑफ द ट्रेड इज वेरी गुड, देन स्टिल यू विल बी सक्सेसफुल। और अगर आप ज्यादा ट्रेड करोगे, दिन भर आप ट्रेड करते रहते हो, सुबह शाम 5, हर दिन आप 10-15 ट्रेड करते हो, लेकिन उस ट्रेडों का क्वालिटीज नहीं है, तो आप पैसा नहीं बनाओगे। तो आपको कहां ज्यादा फोकस करना है? क्वालिटी ऑफ द ट्रेड। नो, एक क्वालिटी ऑफ द ट्रेड हम कैसे कहें कि ये ट्रेड का क्वालिटी अच्छा है, ये ट्रेड का क्वालिटी अच्छा नहीं है? किस बेसिस में हम लोग कहें, है कि नहीं? तो वहां पे 3 चीजें हैं मोस्टली। एक चीज है, नंबर इज प्रोबेबिलिटी, कि आपने एक स्टॉक एक भाव पे खरीदा, एक एरिया में एक प्राइस पे खरीदा, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है ऊपर जाने का। ओके, अगेन आई एम नॉट सेइंग प्रोबेबिलिटी, यहां पे कोई गारंटी नहीं है कि आपने खरीदा, टेक्निकल पैटर्न सब कुछ बढ़िया था, बाई सिग्नल आ रहा था, आपने खरीदा और गारंटीड है कि प्राइस ऊपर ही जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। सो आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी क्या है। सो एक टू आपका ट्रेड का प्रोबेबिलिटी हमेशा अच्छा होना चाहिए, हाई होना चाहिए, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। नो, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? आपका रिस्क कम होना चाहिए। अभी देखिए, हम लोग बार बार कह रहा हूं कि देर इज नो गारंटी, यस और नो, देर इज ओनली प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस गोइंग अप इज हायर, इसका मतलब स्टिल देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि प्राइस नीचे भी जा सकता है। तो अगर बाय चांस प्राइस नीचे हो गया, नीचे चला गया, देन आपका रिस्क बहुत कम होना चाहिए, है कि नहीं? सो हाई प्रोबेबिलिटी, लो रिस्क, सेकेंड पैरामीटर ऑफ ए हाई क्वालिटी ट्रेड इज लो रिस्क। ठीक है? एंड व्हाट इज अ थर्ड पैरामीटर? थर्ड पैरामीटर इज अ हाई रिवॉर्ड। जब आप एक अच्छा क्वालिटी ट्रेड लोगे, तो कौन सा ट्रेड आप, मतलब इसका जो रिवॉर्ड है, इट शुड बी वेरी हाई, इट शुड बी गुड रिवॉर्ड। ऐसा नहीं कि आपने 100 रुपए में एक स्टॉक खरीदा, 100 रुपया 50 पैसा तक गया, तो वहां पे 50 पैसा का ही फायदा होगा। लेकिन आपने 100 रुपए का एक स्टॉक खरीदा, 110 रुपया तक गया, 10% रिवॉर्ड। सो डेफिनेटली द स्टॉक विच गिव्स बिगर मूव, दैट हैज गॉट बिगर रिवॉर्ड। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, नाउ हैविंग सेड दैट, अगेन देखिए, ट्रेडिंग एक स्किल है, अंडरस्टैंड, ट्रेडिंग एक स्किल है। नाउ देखिए, कोई भी ट्रेडर को सक्सेसफुल होने के लिए देयर आर फ्यू थिंग्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम। नाउ व्हाट आर दोस थिंग्स? आई विल जस्ट, ओके, आई हैव गॉट हियर, आई विल जस्ट राइट इट डाउन। ओके, आई विल जस्ट ट्राई टू राइट इट डाउन, पेन में निकाल लेता हूं। नाउ देयर आर 4 इंपॉर्टेंट आपको हमेशा कंपोनेंट चाहिए। आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए, इंट्राडे ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर और पोजीशन ट्रेडर और लॉन्ग टर्म ट्रेडर बनने के लिए, पहले तो आपको चाहिए ट्रेडिंग सिस्टम। यू नीड अ ट्रेडिंग सिस्टम। ठीक है? नाउ ट्रेडिंग सिस्टम क्या है? अभी हम लोग देखिए, हम लोग वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ ट्रेडिंग सिस्टम। ट्रेडिंग सिस्टम क्या है? कि जहां से आप डिसाइड करोगे कि कहां पे एग्जैक्टली आपको खरीदना है, कहां पे आपको बेचना है, कहां पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, आप किस बेसिस पे डिसाइड करोगे। नाउ दिस इज कॉल्ड ए ट्रेडिंग सिस्टम। आपका पास, यू मान लीजिए आप कोई कैंडलस्टिक पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो, मान लीजिए कोई इंडिकेटर आप फॉलो कर रहे हो, है ना? सो बेस्ड ऑन दोज, आप जब डिसाइड करोगे कि यहां पे मुझे खरीदना है, बिकॉज ये इंडिकेटर ने मुझे बाई सिग्नल दिए हैं, बिकॉज ये पैटर्न ने मुझे खरीद कहा है कि अभी प्राइस ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। सो दैट इज योर ट्रेडिंग सिस्टम। Now, second important thing is a risk management. In fact, risk management सबसे number 1 is, important चीज है कि risk management। अभी देखिए, ये मार्केट में nothing is guaranteed, everything is probability. So therefore, आपको risk management होना बहुत ही जरूरी है। So when you talk about risk management, it means risk management means यहाँ पे आप stop loss कहाँ पे लगाओगे, that is a part of the risk management। आप पोजीशन साइजिंग, आप कोई भी ट्रेड करते हो, कितना क्वांटिटी खरीदोगे। अभी देखिए, कोई कोई लोग, उनको जब दिल से लगता है कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है, हम लोग ज्यादा क्वांटिटी खरीद लेते हैं। और जब हम लोग थोड़ा 50-50 में होता है, हाँ भाई स्टॉक तो अच्छा लग रहा है, द स्टॉक इज लुकिंग गुड, बट इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है,
तो हम लोग थोड़ा कम क्वांटिटी खरीद लेते हैं. सो दिस इज नॉट ए वे टू डिसाइड. ओके, सो आपको रूल एक होना चाहिए कि किस बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि कितना क्वांटिटी वो ट्रेड में उस स्टॉक में आपको खरीदना चाहिए. इट इज अ पार्ट ऑफ योर रिस्क मैनेजमेंट. इसको कहता है पोजीशन साइजिंग. ठीक है. सो यस, आपका पास एक ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए. सेकंड, आपका पास रिस्क मैनेजमेंट 100% होना चाहिए. सो बहुत सारे लोग ये भी कहता है कि रिस्क मैनेजमेंट का मतलब कि ड्राइविंग ए कार विदाउट योर ब्रेक. आप जस्ट सोचिए, इफ यू आर ड्राइविंग ए कार विदाउट ब्रेक, क्या होता है? यू आर ड्राइविंग ए कार इन ए हाईवे एक्सप्रेसवे at the speed of 100, 120, 140 kilometer. आपका पास ब्रेक नहीं है, then possibility of accident is extremely high, isn't it? So therefore, you need to have the risk management. And the third is psychology, you know, trading psychology, जहां पे भी हम लोग बात करेंगे आगे जाके. And the fourth thing is called plan. तो आज हम लोग जो बात करेंगे ना, ये हम लोग बात करेंगे एक ट्रेडिंग सिस्टम का ऊपर. Now, this system is based on the concept called demand and supply. I'm sure, guys, you know what is demand and supply. Now, abhi dekhiye, we have talked about many things. You know, we talked about different parameters. We have talked about different patterns. But ultimately, the price of the stock is always moved based on the demand and supply. Now, कितना बायर्स है? डिमांड का मतलब व्हाट इज एंड हाउ मेनी बायर्स आर देयर. सप्लाई का मतलब हाउ मेनी पीपल आर विलिंग टू सेल द स्टॉक. दैट इज कॉल्ड डिमांड एंड सप्लाई. नाउ सिंपल रूल क्या कहते हैं कि इफ द डिमांड इज मोर देन सप्लाई, अगर डिमांड अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, अगर इफ द डिमांड इज मोर देन सप्लाई, प्राइस ऊपर जाएगा, और इफ द सप्लाई इज मोर देन डिमांड, प्राइस नीचे आएगा. दैट इज अ सिंपल रूल. Now, if the demand is equal to supply, तो क्या होगा? Price is going to remain same. So that is the basic logic. Now the question is, जब हम कहते हैं कि yes, the price is moved by demand and supply. Now लोग ये भी कहते हैं कि at a given point of time कि lot many things are happening. Geopolitical, economic, results, सीजन में रिजल्ट डिक्लेयर होते रहता है. सो बहुत सारा इवेंट्स हो रहा है. नो, जितने भी इवेंट्स, इकोनॉमिक इवेंट्स हो रहा है, दे डायरेक्टली इंपैक्ट द डिमांड एंड सप्लाई. मान लीजिए कंपनी बहुत बढ़िया रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, फैंटास्टिक रिजल्ट, सो मोर पीपल आर गोइंग टू बाय द स्टॉक, यस और नो? सो डिमांड इज गोइंग टू इंक्रीज. अगर कोई भी कंपनी ने बहुत बुरी रिजल्ट, खराब रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, तो पीपल आर गोइंग टू सेल द स्टॉक. इट मींस सप्लाई इज गोइंग टू इंक्रीज. सो अल्टीमेटली जो भी होता है, it all impacts the demand and supply. Correct? So yes, now also हम लोग ये भी कह सकता हूं कि okay, is it all right now? Okay, cool. So it is demand and supply. No, ये कहना भी गलत नहीं होगा कि प्राइस मूव, मार्केट में जो प्राइस मूवमेंट होता है, वो होता है बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई. जब डिमांड ज्यादा होगा सप्लाई से और सप्लाई ज्यादा होगा डिमांड से, दैट इज कॉल्ड इम्बैलेंस, राइट? दैट इज कॉल्ड इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई. जब इम्बैलेंस होता है तो प्राइस मूव होता है, एंड जब बैलेंस होता है, दिस इज कॉल्ड अ बैलेंस. बैलेंस का मतलब डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई. जब डिमांड एंड सप्लाई दोनों सेम होता है तो प्राइस मूवमेंट नहीं होता है, प्राइस हमेशा साइडवेज मूव होता है उस मोमेंट में, राइट? सो दिस इज द बेसिक लॉजिक. नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, ये डिमांड एंड सप्लाई का जो बीच में इम्बैलेंस है, ये इम्बैलेंस कौन क्रिएट करता है? ऑब्वियसली ट्रेडर्स, द बायर्स एंड सेलर्स. नाउ मार्केट में दो प्रकार का बायर्स एंड सेलर्स होता है. एक प्रकार का बायर्स एंड सेलर्स जिसको हम कहता हूं इंस्टीट्यूशनल बायर्स एंड सेलर्स. यस और नो? जिस जो इंक्लूड है FIIs, DIIs, right? These are all big insurance companies, mutual funds. These are all bade institutions hai. Now second group of people are called retail traders. So what are retail traders? Retail traders, people like you and me, we are all retail traders. Now
ऑफ कोर्स जब इंस्टीट्यूशन कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं, दे प्लेस ह्यूज क्वांटिटी, मिलियंस ऑफ शेयर्स, क्रोर्स ऑफ शेयर्स एक झटके में खरीदने के लिए और बेचने के लिए डाल देते हैं. सो रिटेल ट्रेडर्स ऑन द अदर हैंड कितना क्वांटिटी, 50 शेयर, 100 शेयर्स, मे बी 1000 शेयर्स, छोटा छोटा क्वांटिटी डालते हैं. सो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, दे ड्राइव द मार्केट. क्योंकि जब भी उन लोग ऑर्डर डालते हैं मार्केट में, तो क्या होता है, मार्केट में जबरदस्त इम्बैलेंस क्रिएट होता है. And most of the time, in fact 99% of the time, it is the institutions who drives the market. retail traders क्या होता है, in between fill in the gap होता है, in between gap होता है. Now जब हम लोग को मालूम है कि when we know that most of the time it is the institutions who drive the market, it is also not wrong to say कि अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, देन आपको ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को फॉलो करना पड़ेगा. इसका मतलब अगर इंस्टीट्यूशंस खरीद रहा है तो आपको बाय करना पड़ेगा, अगर इंस्टीट्यूशन बेच रहा है तो आपको सेल करना पड़ेगा. आप इस तरीके से पैसा नहीं कमा सकते हो कि इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे हैं और आप बेच रहे हो. कोई भी स्टॉक में FIIs DIS खरीद रहे हैं और आप वहां पे शॉर्ट कर रहे हो, आप पैसा नहीं बनाओगे. अगर कोई भी स्टॉक इंस्टीट्यूशन बेच रहे हैं और आप वहां पे खरीद रहे हो, तो आप पैसा नहीं बनाओगे. एम आई राइट गाइज? तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू फॉलो द इंस्टीट्यूशन. एंड दैट इज द बिग क्वेश्चन कि हम लोग किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करेंगे, है ना. तो ये इतना मुश्किल नहीं है. उनके लिए हम लोग को दो चीज मालूम होना चाहिए. एक है कैंडलस्टिक चार्ट. ओके, सो कैंडलस्टिक चार्ट हम लोग ने डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं कि हाउ द कैंडलस्टिक चार्ट लुक लाइक. आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माय चार्ट्स एज वेल. अगेन जस्ट गिव मी अ सेकंड. ओके, can you see the chart, guys? So this is what is called, this is all, we all know that this is what is a candlestick chart. Now this chart itself tell us कि हम लोग को कहते हैं कि कहां पे institutions are buying and कहां पे institutions are selling. When you know how to read the candlestick chart, this candlestick chart is going to tell us where the institutions are buying and selling. Now this is in a way kind of a chart pattern. We have already covered this part in the previous session, so I'll just come and explain it slightly later. Now हम लोग को मालूम है कि we need to follow the institution, right? We need to what? Follow the institution. Now when the institutions buy, हम लोग को क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए. Now when the institution sells, right, हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को बेचना चाहिए. Now the question is how to do it. So we can identify, हम लोग ये जगह आइडेंटिफाई कर सकते हैं चार्ट में कि कहां पे इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे हैं, और जहां पे इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे हैं इसको कहता है डिमांड जोन. ओके, इसको क्या कहता है, इसको कहता है डिमांड जोन. एंड जहां पे इंस्टीट्यूशन बेचते हैं उसको कहता है सप्लाई जोन, राइट. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. सो देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. वन इज कॉल्ड डिमांड जोन and one is called supply zone. So what is the definition of demand zone? Demand zone is a zone जहां पे institutions खरीदते हैं, right? And what is a supply zone? Supply zone is a zone where the institutions are sellers. So whenever the price comes to the demand zone, जब price demand zone में आएंगे तो आप क्या करोगे, आप buy करोगे. And when the price comes to the supply zone, आप क्या करोगे, आप sell करोगे. Okay, so this is the basic foundation of the entire logic. Now the next question is हमको demand and supply zone को identify कैसे करना है, looking at a chart. Okay, now there are two methods. I'm going to show you different methods to identify the demand and supply zone. Now demand zone के लिए there are two methods. Demand zone के लिए let me draw it. Demand zone के लिए
There are two methods to identify the demand zone. One method is called simple. I'll explain you the logic also. आपको लॉजिक में भी समझ में आ जाएगा. द पहला जो लॉजिक है डिमांड जोन आइडेंटिफाई करने का, इसको कहते हैं ड्रॉप बेस एंड रैली. ड्रॉप बेस एंड रैली, right? This is, and second is what is called rally base and rally. Rally base and rally. ओके ये दो मेथड से हम लोग, वेरी सिंपल है, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वेरी सिंपल. ओके इट इज मतलब ट्रेडिंग सिंप्लीफाइड यू कैन से. सो व्हाट डू यू मीन बाय ड्रॉप बेस एंड रैली? ड्रॉप का मतलब क्या होता है कि प्राइस गिर रहा है, प्राइस गिर रहा है, राइट? सो प्राइस गिर रहा है, प्राइस गिर रहा है, प्राइस गिर रहा है, प्राइस गिर रहा है. सो दिस इज व्हाट वी कॉल ड्रॉप. इसको हम लोग क्या कहेंगे? ड्रॉप इन प्राइस. नाउ ये जो ड्रॉप हो रहा है ना, वो किस लिए हो रहा है? बिकॉज देयर आर मोर सेलर्स देन बायर्स. यहां पे बिकवाली करने का लोग ज्यादा है, सेलर्स ज्यादा है देन द बायर्स, इसीलिए प्राइस गिर रहा है. एम आई राइट? नाउ एक जगह पे आके क्या हुआ, प्राइस का गिरना बंद हो गया, प्राइस स्टार्टेड मूविंग साइडवेज. ओके दिस इज व्हाट वी कॉल बेस. ओके दिस इज व्हाट इज कॉल्ड बेस. ओके एंड देन हम लोग क्या देखेंगे? एक जबरदस्त रैली देखेंगे यहां से, right? So why do you see a explosive, very powerful rally? Because now demand is more than supply, and this is called rally. Okay, this is called, so drop, base and rally. जब भी आप ये पैटर्न देखोगे, अभी देखिए मान लीजिए आपका मार्केट उसका बाद आपका यहाँ पे कहीं है, जब आप पीछे देखोगे, when you look back, जब आप पीछे देखोगे तो आपको ये एरिया दिखाई देगा जहां से जबरदस्त रैली शुरू हुआ था. एम आई राइट? जहां से वेरी शार्प, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल रैली शुरू हुआ था. तो आप क्या करोगे? वहां पे बेस एरिया में जो कैंडल है, उस कैंडल को आइडेंटिफाई कर लोगे. देयर कुड बी वन कैंडल, देयर कुड बी मोर देन वन कैंडल, एंड देयर कुड बी 3-4 कैंडल्स एज वेल. सो आप बेस एरिया का जो कैंडल्स है उसको आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है? और जैसे आपने बेस कैंडल आइडेंटिफाई कर लोगे, आप क्या करोगे? आप इस एरिया को आप ड्रॉ कर दोगे, ठीक है? दिस एरिया को ड्रॉ कर दोगे. नाउ द मोमेंट यू ड्रॉ दिस एरिया, दिस इज नोन एज द डिमांड जोन, राइट? ये इसको हम क्या कहेंगे? डिमांड जोन कहेंगे. नाउ व्हाई दिस इज अ डिमांड जोन? बिकॉज देखिए उसका पहले डिमांड एंड सप्लाई का बीच में जो रिलेशनशिप था, यहां पे द सप्लाई वाज मोर देन डिमांड, सप्लाई वाज मोर देन डिमांड, सप्लाई वाज मोर देन डिमांड, सप्लाई वाज मोर देन डिमांड. नाउ यहां पे क्या हुआ एग्जैक्टली? there's a demand and supply is equal, and वहां पे suddenly the equation between demand and supply have changed, right? Okay, does bank nifty correct example? Drop base rally. Does bank nifty is a correct example? Yes, we'll go to nifty, bank nifty, Mr. Avinash, and see how all the different stocks, different indices, the patterns are repeated. ठीक है? तो नाउ हम लोग ने यहाँ पे, नाउ ये जो चेंज इन द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई है, कि यहाँ पे देखिए सेंटिमेंट बहुत बेरिश था, इसीलिए स्टॉक गिर रहा था. नाउ किसका पास इतने पावर है कि इसको ये गिरने यहाँ पे बंद हो जाए और स्टॉक को ऊपर लेके जाने के लिए? किसका पास इतना पावर है? डेफिनेटली इट इज द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हु बॉट. ओके नाउ यहाँ पे और एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअली टू अंडरस्टैंड, यू नो, देखिए हम लोग जो रिटेल ट्रेडर होता है ना, रिटेल ट्रेडर जब मार्केट नीचे आता है, मार्केट हमेशा जब नीचे आता है, एकदम मार्केट जब नीचे आता है, यहाँ पे रिटेल ट्रेडर हमेशा डरे हुए होते हैं. दे डू नॉट हैव द कॉन्फिडेंस टू बाय एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ओके सो रिटेल ट्रेडर कहाँ खरीदेंगे? हमेशा जब प्राइस ऊपर जाने लगेंगे, जब प्राइस ऊपर जाने लगेंगे यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स खरीदेगा. लेकिन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर कब खरीदेगा? जब प्राइस नीचे आ जाएगा और जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को लगेगा कि वैल्यूएशन इज नाउ वेरी अट्रैक्टिव, दे आर गोइंग टू बाय द स्टॉक, एंड जब उन लोग जबरदस्त बाइंग चालू कर देंगे, द स्टॉक इज गोइंग टू गो अप. ठीक है? सो हम लोग कहते हैं ना कि बाय लो सेल हाई, एक्चुअली दैट इज डन बाय द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स.
नो, रिटेल ट्रेडर हमेशा क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, दे हमेशा ऊपर खरीद के नीचे बेचते हैं, क्योंकि जब प्राइस ऊपर जाता है यहाँ पर रिटेल ट्रेडर का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है कि हाँ भाई, अभी अभी देखिए ना, अभी मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, आप इंडाइसेस देखिए, हर दिन ऊपर जा रहे हैं और सब लोग स्मॉल कैप मिड कैप खरीदने के लिए आ रहे हैं। ये सुनो, क्योंकि अभी लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी द इंडाइसेस, दोस स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप, दे हैव रैलीड सब्सटेंशियली, अभी लोग खरीदने के लिए आ रहा है ना। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज एन एग्जांपल. So this is where the institutional trader buys, and this is exactly where the institutional trader buys. So once आपने मार्क कर लिया डिमांड जोन को, तो आप क्या करोगे, यू आर गोइंग टू वेट फॉर द प्राइस टू कम. हो सकता है कि प्राइस कुछ दिनों का बाद आवे, हो सकता है कि प्राइस कुछ हफ्ते को बाद आए. जब भी प्राइस वापस ये जोन तक आएगा, that is where you are going to buy the stock. Okay, that is where you are going to buy the stock. So you are not buy. And when you say high probability, हम लोग रिमेंबर, हम लोग ने कहा था कि कोई भी ट्रेड का हाई प्रोबेबिलिटी. सो व्हेन यू बाय इन ए स्टॉक, नो, यहाँ पे मैक्सिमम ट्रेडर जो रिटेल ट्रेडर है ना, यहाँ पे डरेगा खरीदने के लिए, क्योंकि उनको ये स्टॉक हैज बीन फॉलिंग 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 फॉलिंग, गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है कॉन्स्टेंटली. सो रिटेल ट्रेडर्स हमेशा डरेगा यहाँ पे खरीदने के लिए. बट इन रियलिटी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि प्राइस यहां से बाउंस होएगा. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. अभी रिलायंस रिसेंटली 2 महीना पहले, 3 महीना पहले 2250, 30, 40 रुपया तक आ गया था. कॉन्स्टेंटली गिर रहे थे, 2800 रुपये से गिर रहे थे. Nobody was willing to buy that stock, and the price was exactly at the demand zone. एंड वहां से जो रैली चालू हुआ स्टॉक का, 2800 रुपीज क्रॉस करके गया. यस और नो? सो दैट इज एग्जैक्टली द एग्जांपल. सो पीपल विल कम टू बाय एट 2400, 2500, 2600, but they are not going to buy in the right. Now this is what is called a demand zone. So this is a drop based rally. So हम लोग पहले ये just theoretically will understand the concept, and then हम लोग practically chart में जाके उसको देखेंगे. ओके राइट गाइज, डू यू ऑल एग्री विथ मी? फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, उसको थियोरेटिकली जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को थियोरेटिकली समझ लेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू गो एंड एनालाइज इन द चार्ट जो भी हम लोग समझे हैं. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सप्लाई जोन. सप्लाई जोन, ओके, सप्लाई जोन. नाउ सप्लाई जोन का दो तरीका है, कंप्लीटली ऑपोजिट टू डिमांड जोन. सो सप्लाई जोन का है रैली, बेस एंड ड्रॉप. रैली, base and drop. ओके, एंड सेकेंड जो मेथड है, इसको कहते हैं ड्रॉप, बेस एंड ड्रॉप. ड्रॉप, बेस एंड ड्रॉप. ओके, देयर आर टू मेथड्स. सो व्हाट डू यू मीन बाय रैली, बेस एंड ड्रॉप? रैली का मतलब है प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है. दिस इज व्हाट वी कॉल द रैली इन द प्राइस. यस और नो? At some point, the price stopped going further. It started moving sideways. Now, this is what we call the base, right? This is called rally. This is called base. And then price गिरना चालू हो गया बहुत जोर से. Now, आप बताइए मुझे, कोई भी स्टॉक, एक रिलायंस, L&T, TCS, ITC, कोई भी स्टॉक अगर इस तरीके से गिरता है, नो, किसका पास इतना कैपेसिटी है कि स्टॉक को इस तरीके से गिरावे? रिटेल ट्रेडर का पास इतना कैपेसिटी है क्या कि उन लोग बेच के स्टॉक को गिराएंगे? एब्सोल्युटली, उनका पास इतना पावर नहीं है. इट हैज टू बी इंस्टीट्यूशंस. यस और नो? तो हम लोग क्या करेंगे, नाउ लेट्स से द प्राइस इज समवेयर इन बिटवीन. जब हम लोग पीछे देखते हैं, then we saw that this is the base from where the stock started falling very sharply. तो हम लोग क्या करेंगे, इस बेस एरिया में जो भी कैंडल है, उस कैंडल को हम लोग मार्क कर देंगे, और जैसे हम लोग इस कैंडल को मार्क कर देंगे, हम लोग को क्या मिलेगा? सप्लाई जोन. एंड वंस वी आइडेंटिफाई द सप्लाई जोन, हम लोग का काम क्या है? वी आर गोइंग टू वेट फॉर द प्राइस टू गो टू द सप्लाई जोन, and then when the price goes and touches the supply zone, we are going to do what? Sell. Okay, we are going to sell. अब देखिए, most of the retail traders जो है ना, they are extremely bullish at this point of time.
उनको लगता है कि नहीं अभी मार्केट और ऊपर जाएगा, बहुत बुलिश है, लेकिन द प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई दैट द स्टॉक इज गोइंग टू करेक्ट और पुल बैक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल. ओके, साउंड्स गुड. हाउ टू, ओके, टाइम फ्रेम कितना रखे? गौरव ने पूछा है कि कितना टाइम फ्रेम में. वेरी गुड. अगेन दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ टाइम फ्रेम. नाउ आपका जो टाइम फ्रेम है ना, ये टाइम फ्रेम डिपेंड होता है आपका ट्रेडिंग स्टाइल पे. ओके, ट्रेडिंग स्टाइल पे, आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है. अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो, अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो, यही जो डिमांड एंड सप्लाई जोन है, आप कौन सा टाइम फ्रेम में करोगे? 15 मिनट्स में करोगे, आप 30 मिनट्स में भी कर सकते हो, है ना. सो और इवन आप स्कैल्पिंग करते हो, बहुत फास्ट ट्रेडिंग करते हो. स्कैल्पिंग का मतलब 50 पैसा, 1 रुपया के लिए ट्रेड करते हो. इवन यू कैन यूज 5 मिनट्स टाइम फ्रेम एज वेल. ठीक है, चार्ट कंप्लीट लॉजिक वही का वही है. द लॉजिक रिमेन्स एग्जैक्टली सेम, द पैटर्न रिमेन्स एग्जैक्टली सेम, ओनली डिपेंड्स ऑन द टाइम फ्रेम. अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर का मतलब क्या होता है कि आप आज खरीद के कुछ घंटों के लिए रखना चाहते हो पोजीशन, मे बी ए डे और टू. उसके लिए आप क्या, कौन सा टाइम फ्रेम यूज करोगे? 60 मिनट्स का टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम, है ना. और मनीष ने और भी बात कहा था 75 मिनट्स का टाइम फ्रेम. और मोर कंफर्टेबल होना चाहते हो तो 120 मिनट का टाइम फ्रेम. सो दिस टाइम फ्रेम्स आर फॉर स्विंग ट्रेडर्स. ठीक है. नाउ अगर आप पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हो, पोजिशनल ट्रेड का मतलब क्या होता है कि आपको पोजीशन रखना है कुछ हफ्तों तक, महीनों तक. देन आप क्या कर सकते हो? डेली एंड वीकली, डेली वीकली टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो. और अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर हो, अगर आप इन्वेस्टर हो, ठीक है, अगर कोई भी स्टॉक को आपको इन्वेस्ट करना है 1 साल के लिए, ओके, तो आप कौन सा मंथली टाइम फ्रेम में यूज करोगे? ये सेम कॉन्सेप्ट आप यूज करोगे अलग अलग टाइम फ्रेम में. कॉन्सेप्ट लॉजिक रिमेन सेम, ओनली आपका टाइम फ्रेम चेंज हो जाता है. एम आई राइट? अभी देखिए रिसेंटली जब मार्केट आके जहां से रैली चालू हुआ था, बहुत सारे स्टॉक्स डिमांड जोन में, मंथली डिमांड जोन से आके जबरदस्त रैली दिया. 20, 40, 50, 60% रैली हुआ. कहां से? मंथली डिमांड जोन से. Sounds good, guys. Can you give me a quick check in the chat box? Are we in place? आप enjoy कर रहे हो? So it's very important that I need to keep on asking you time to time. Okay, now let's go to the supply zone. So supply zone का हम लोग का रूल क्या था? रैली, बेस एंड ड्रॉप. थैंक यू रंजीत. रैली, अभी देखिए प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, हम लोग इसको कहेंगे रैली बिकॉज द डिमांड इज मोर देन सप्लाई. नाउ इसको कहेंगे रैली, प्राइस जबरदस्त रैली हो रहा है. नाउ एक जगह पे प्राइस आके ऊपर जाना बंद हो गया, प्राइस साइडवेज जाने लगा. अभी देखिए कलर का कॉम्बिनेशन, यहां पे आपको कौन सा कलर ज्यादा दिखाई दिया? ग्रीन कलर. एम आई राइट? लॉन्ग लॉन्ग ग्रीन कलर, इसका मतलब मोमेंटम बहुत ज्यादा है. नाउ यहां पे आके क्या हो गया? प्राइस का ऊपर जाना बंद हो गया यहां पे. यस और नो? इसका मतलब डिमांड वाज मोर देन सप्लाई, और यहां पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई. ठीक है, तो यहां पे था एंड सडनली प्राइस गिरना चालू हो गया, धड़ाम से मार्केट गिर गया, स्टॉक गिर गया. ओके, इतना तेजी से गिरा. नाउ क्यों गिरा? बिकॉज सप्लाई इज मोर देन डिमांड. कोई बड़े ट्रेडर आके इतने ज्यादा बिकवाली की यहां पे कि मार्केट जबरदस्त गिर गया. समबडी, एंड वो समबडी कौन है? वो समबडी इंस्टीट्यूशन है, बड़े बड़े एफआईआईज है, डीआईआईज है. उन लोग आके मार्केट में इतनी बुरी तरह से बिकवाली की कि मार्केट जबरदस्त गिर गया. एम आई राइट? सो हम लोग क्या करेंगे? ये जो बेस एरिया है ना, इस बेस एरिया को मार्क कर देंगे. और जैसे हम लोग ने बेस एरिया को मार्क कर दिया तो हमको क्या मिला? सप्लाई जोन. और हम लोग सप्लाई एरिया भी कर सकते हो. इसका मतलब इस एरिया में सप्लाई है, इसका मतलब इस एरिया में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बिकने के लिए तैयार है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो नाउ हम लोग एक बार उसको मार्क कर दिया तो हम लोग क्या करेंगे? वेट करेंगे प्राइस को. कब का? अभी देखिए यहां पे मैं एग्जांपल देता हूं कि अभी देखिए मुझे ऑलरेडी मालूम है कि मैं बेचूंगा कब. आई नो द टर्निंग पॉइंट बिफोर द मार्केट गोज देयर.
मेरा टर्निंग पॉइंट कहां है? मेरा टर्निंग पॉइंट इस एरिया है। अभी मार्केट कहां पे है? मेरा मार्केट अभी यहां पे है। नाउ मुझे मालूम है कि जब मार्केट मेरा सप्लाई जोन में आएगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्केट टर्निंग बैक इज गोइंग टू बी वेरी हाई। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? आई एम गोइंग टू वेट आई एम गोइंग टू वेट फॉर द प्राइस टू कम टू द सप्लाई जोन, और जैसे प्राइस सप्लाई जोन में आएगा, आई एम गोइंग टू सेल। नाउ अभी देखिए, व्हाई आई एम सेलिंग? बिकॉज आई एक्सपेक्ट द प्राइस टू गो डाउन। एम आई राइट? मैं क्यों बेच रहा हूं? क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग द प्राइस टू गो डाउन। लेकिन इज देयर एनी गारंटी दैट द प्राइस इज गोइंग टू गो डाउन? इज देयर एनी गारंटी गाइस दैट द प्राइस इज गोइंग टू गो डाउन? गारंटी है क्या? गारंटी नहीं है। मार्केट में कोई भी चीज का गारंटी नहीं है। सो हम लोग क्या करेंगे? रिस्क मैनेजमेंट करेंगे। कैसे रिस्क मैनेजमेंट करेंगे? विल पुट ए स्टॉप लॉस अबव दिस सप्लाई जोन। जब हम लोग सप्लाई जोन में बेचेंगे, वी आर गोइंग टू पुट ए स्टॉप लॉस अबव द सप्लाई जोन। इसका मतलब इन केस आई गो रॉन्ग, अगर आप गलती भी हो गया आपका, अगर आपका गलत भी हो गया, आप ट्रेड फेल भी हो गया आपका, तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना है? मैक्सिमम लॉस इज ओनली दिस मच। यस और नो? सो दिस इज कॉल्ड मिनिमम रिस्क। मिनिमम रिस्क। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज कॉल्ड मिनिमम रिस्क. Okay, so yes, so you sell in the supply zone and you put the stop loss above the supply zone. Okay, now let's go to demand zone. So demand zone is opposite. Drop, price गिर रहा है, प्राइस गिर रहा है, प्राइस गिर रहा है, और एक जगह पे प्राइस का गिरना बंद हो गया है ना. सो दिस इज अ बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई. अभी देखिए, अगेन अनदर वेरी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ यहां पे प्राइस क्यों गिर रहा था? बिकॉज द सप्लाई वॉज मोर देन डिमांड. सेलर बहुत ज्यादा था. लेकिन यहां पे क्या हो गया? द डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई. क्यों? दो रीजन हो सकता है. जितना भी सप्लायर्स था, जो भी इंस्टीट्यूशन, जो भी लोगों को बेचना था, उन्होंने उसका माल बेच दिया है और उसका पास बिकने के लिए और कुछ नहीं है. तो दैट इज व्हाई द सप्लाई हैज रिड्यूस्ड. नंबर वन. नंबर टू, ये भी हो सकता है कि डिमांड हैज आल्सो इमर्ज्ड. सो व्हाटएवर बी द सिनेरियो, द डिमांड इज गोइंग टू बी इक्वल when the price starts moving sideways. Okay, and then क्या हुआ? Suddenly massive extended range candles. तो हम लोग ने जैसे कहा था कि there are long green candles have got more bullish energy. So these are big institutional candles. क्योंकि ये जो लॉन्ग कैंडल्स होता है ना, ये बेसिकली इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स. क्योंकि रिटेल ट्रेडर का पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि इस तरीके का कैंडल वो क्रिएट करे. These are all institutional candle. इसका मतलब this is the area where the institutions are buyers. This is where the institutional buying has emerged, right? This is the area where the institutional buying has emerged and the price has gone up. So हम लोग क्या करेंगे? Before the institutional buying has emerged, ये जो base area है, इसको हम mark कर देंगे. There are two lines. ओके, एंड मैं ये भी दिखाऊंगा आपको ये लाइन को कैसे ड्रॉ करना है. दिस इज कॉल्ड अ डिमांड जोन. ओके, सो इट विल बी द सेम फॉर ऑल 4 days. नो प्रवीण सी. ओके, सो लेट मी आंसर क्वेश्चंस. Many people are asking ki why we are studying technical analysis when it is a option trading class. Okay, see, if you want to really trade options or derivatives, right, or want to make derivative strategy, आपको मार्केट का डायरेक्शन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. मार्केट बुलिश है, मार्केट बेरिश है, मार्केट ऊपर जाने वाला है, मार्केट अभी प्रोबेबिलिटी किस चीज का है, क्योंकि आपका स्ट्रैटेजी उस तरीके से बनेगा. सो दैट इज व्हाई फर्स्ट 2 days, प्रवीण, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टेक्निकल एनालिसिस, सो दैट जितने भी नए लोग हैं उनको एटलीस्ट ये समझ में आ जाते हैं कि मार्केट का ट्रेंड किस तरीके से एंटिसिपेट किया जाए. आने वाले दिनों में मार्केट बुलिश है, बेरिश है, इसको किस तरीके से एंटिसिपेट किया जाए, एंड देन आपको स्ट्रैटेजी उस तरीके से बिठाना पड़ेगा. एम आई राइट प्रवीण? सो नाउ अभी देखिए और एक. ओके, सो दिस इज माय डिमांड जोन एज पर एंट्री कर. ओके, सो वंस आई मार्क माय डिमांड जोन, तो मैं क्या करूंगा?
I'm going to wait for the price to come back to the demand zone. And then when the price comes to the demand zone, I'm going to do what? I'm going to buy, right? Because I know that in the same area, there is a massive institutional buying happened in the past. And the probability is very high that these institutions are going to come back and start buying again. And uska bhi logic hai. Actually, I don't want to go that details into logic because इसके लिए बहुत ज़्यादा time लगेगा. So let me explain it in a brief way. Okay. So now although अब देखिए यहाँ पे जो retail बाकी लोगों का market का sentiment है, that is extremely bearish. बट एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर आपको मालूम है कि स्टॉक एक जबरदस्त डिमांड जोन में आ चुका है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस गोइंग अप फ्रॉम हियर इज वेरी हाई. रिटेल ट्रेडर बेरिश है. एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर आपको यू आर बिकमिंग बुलिश ऑन द मार्केट. सो यू बाय, बट अगेन एज आई सेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस गोइंग अप इज हायर. There is no guarantee. Yes or no? Only probability is higher. So what you are going to do? You are going to put a stop loss. You are going to put a stop loss below the demand zone. It means when you buy here, if you go wrong, your risk is only this much. This is what is called low risk. So as a trader, please understand, you have to keep managing your risk all the time. Okay? Okay, any recommended book for technical analysis? Ashish, I'm going to tell you, there are so many books on trading psychology. There are so many books on trading system. I'm going to tell you, don't worry. Okay. So please ask that question towards the end. So now key things here, how to identify demand and supply zones, how to draw the demand and supply area. Now look at this. Look at this. This is how you do. Now see, at this, अब ये chart में देखिए, एकदम थियोरेटिकली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. अभी प्राइस कहां पे है? प्राइस यहां पे है. प्राइस कहां पे है? प्राइस अभी यहां पे है. हो सकता है कि ये 5 मिनट का चार्ट है, ये 5 मिनट का चार्ट है. हो सकता है कि ये 60 मिनट का चार्ट है. हो सकता है कि ये डेली चार्ट है, राइट? ये कुछ भी चार्ट हो सकता है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, थैंक यू सो मच मिस्टर रंजीत. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट किस टाइम फ्रेम में है. ये एप्लीकेबल 5 मिनट के लिए भी है, ये एप्लीकेबल 60 मिनट्स के लिए भी है, एंड ये एप्लीकेबल डेली के लिए भी है. सो इट इज नॉट इमेटीरियल टू अस, इट इज जस्ट ए चार्ट. अभी आप प्राइस कहां पे हो? आप यहां पे हो. जब आप नीचे देखा, पीछे देखा, नीचे से पीछे देखा, ठीक है, आप जब नीचे से पीछे देखा तो आपको यहां पे एक एरिया दिखाई दिया. कैन यू सी दिस एरिया गाइस? कैन यू सी दिस एरिया? यहां पे क्या हुआ था कि उसका पहले मार्केट गिर रहा था, मार्केट गिर रहा था, स्टॉक गिर रहा था. नाउ यहां पे क्या हुआ? बेस हुआ, एंड उसका बाद इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे इस मूव को? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एक्सप्लोसिव मूव. ओके, this is what is called explosive, right? Can you tell me yes or no? Is it an explosive move? Absolutely, this is an explosive move. Now किसका पास इतना कैपेसिटी है कि इस तरीके का मूव क्रिएट करेगा मार्केट में? आप बताइए. It is only the big institution, right? It is the institutional traders, right? Thank you so much, Parv, Salaluddin, Ranjit. Very good. Thank you so much, guys, for your feedback. Right? So it is this move can be created by only the institutions. So इसका बाद क्या करोगे? आप ये डिमांड जोन को मार्क कर दोगे, and then you are going to wait for the price to come back. और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, बाय चांस दिन में प्राइस यहाँ पे पुल बैक कर लिया, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे बाय करोगे. Are you getting my point? The probability of price going up is very high. So demand zone should meet this criteria. Number one, explosive move from the base. आपका जितना ही एक्सप्लोसिव मूव देगा ये बेस से, इतना ही पावरफुल होगा आपका डिमांड जोन, और इतना ही पावरफुल होगा आपका सप्लाई जोन. ये डिपेंड करता है हाउ एक्सप्लोसिव द मूव इज. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एक्सप्लोसिव मूव.
Right. Second thing, price did not retrace back to the base after the moved out. This is called, okay, now let me explain it. इसको मैं delete कर लेता हूं. Okay. Now this portion is called leg in. इसको कहता है leg in. Leg in. And this portion को कहता है leg out. ठीक है. Leg in and leg out. ठीक है. So एक बार लेग आउट हो जाने का बाद प्राइस दोबारा वापस यहां तक नहीं आया अभी तक. ओके. प्राइस यहां तक वापस नहीं आए हैं. सो जब पहले दफा फर्स्ट टाइम के लिए प्राइस आएगा ये जोन में, अभी क्या हुआ, ये जोन आपका क्रिएट हो गया. ये जोन आपका क्रिएट हो गया एंड देन ये फर्स्ट टाइम के लिए आ रहा है. सो दिस इज ए वेरी पावरफुल डिमांड जोन, राइट? This is a very powerful demand zone. Okay, then sir stop loss is taken out and downtrend continues. Yes, हो सकता है. Everything has, there is always a possibilities of going wrong, right? If breaks the demand zone. Okay, Rashmi Gupta ने पूछा है, if the demand zone is broken, then what will you do? If your demand zone is broken, आप stop loss हो जाओगे and then you'll have to find a next trade around the next demand zone. इसका नीचे का next demand zone क्या है? Okay, so the moment objectively your stop loss is hit, you are out. You are out of the trade. अब गलत हो गया आपका trade. Okay. Sir, what is the reason for this fall back to the demand zone? Okay. Okay, that is a Avneet. It's a very interesting question, right? अभी देखिए मैं आपको दिखाऊंगा. अभी देखिए there are different kind of trades are there. There are primarily दो तरीके का ट्रेडिंग होता है. एक तरीके का ट्रेडिंग होता है पुल बैक ट्रेडिंग. ओके, पुल बैक ट्रेडिंग. ठीक है. सेकेंड तरीके का ट्रेड होता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग. ब्रेकआउट ट्रेडिंग. सो पुल बैक ट्रेडिंग में क्या होता है, हमेशा प्राइस पुल बैक होता है. अभी देखिए निफ्टी क्या हुआ, बैंक निफ्टी क्या हुआ गाइस. Hello, what happened to Bank Nifty? Last month, 2 months back, Bank Nifty has broken out. And uska baad, where it has retraced to? It has retraced back to where it had broken out. है ना, pullback होता है. Nifty, it was so bullish. Market was going up. Then now what is happening? Now pullback is happening. So there is going to be a pullback because there is going to be people who are going to book their profit. Because every buyer is an eventual. So Avneet का जो question है, what is the reason for fall back to the demand zone? Now please understand logically कि every buyer is a seller and everybody is a trader in the market, right? So therefore अगर किसी ने profit में हो है, then they will book profit, and when they will book profit, price is going to come down, and when the price start falling down, traders will start short selling. जब profit booking and short selling will continue, then the price is going to pull back. Yes or no? So why the price pulls back? Because of the supply is more than demand. Am I right, guys? Because the supply is more than demand. Okay, supply is more than demand. That is why price is pulling back. And this supply is caused by what? One is profit booking. And second is what? Short selling. There are two reasons. Okay, so that is why the price is pulled back. And now here what happens when all the short sellers, people who have sold all the way here, okay, they are in big profit, so they are going to cover their short positions. And the moment they will start squaring up their short position, demand is going to increase. Yes or no? And at the same time, people who have booked their profit here, for them, the price has come down. It is another opportunity to buy. Okay. Okay, guys, thank you so much. Now let's go. Okay, so here is the price. Very simple. आपको क्या करना है? In order to find a demand and supply zone, you have to look back. जब आप ऊपर से नीचे से पीछे look back करोगे तो आपको demand zone मिलेगा. So this is a drop, this is a drop, this is a drop, this is a base, and this is a rally, right? So when you see the base,
you mark the zone, it is a demand zone. Okay, now for similarly, this is a supply zone. Okay, this is another example of a supply zone. Now, what is the strategy? Rally. See, iska pehle price was rallying like this. Okay, just a sec. My marker is not working very nicely today. Above chart where the supply zone. Okay, Rasmin above. Okay. Okay. So this is a rally. Okay, this is a rally. Right? This is a rally. This is the base candle, guys. Yes or no? And this is a drop. हम लोग इस तरीके का कैंडल दिखाई देते हैं मार्केट में. Do you agree with me? So this is a drop. अब मुझे बताइए इस यहाँ पे किसने बेचा होगा? ये जो कैंडल है, ये ड्रॉप है, इसमें किसने बेचा होगा? बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन ने. तो इसका मतलब दे हैव सोल्ड एंड द प्राइसेस कम डाउन. सो इसका मतलब जिसने भी बेचा है उन्होंने उसका बिकवाली कंप्लीट नहीं किया है और भी पेंडिंग सेल ऑर्डर है. सो दिस इज गोइंग टू बी द सप्लाई जोन, राइट? So when the price goes back to this level again, right, this is where sell and this is where the stop loss. Sounds good? Now, there are two things. Supply zone, strong explosive move down from the base. Price did not retrace to the base after the move and 6 candle and less. So this is what is the logic for the supply zone. Look back, look for the base, rally, base and drop. This is the rally. This is the base. This is the drop. Mark the base area. You get the supply zone. And as a homework, देखिए एज अ ट्रेडर ना आपको बहुत होमवर्क करना पड़ता है. तो आप क्या करोगे? घर पे जाके मार्केट खत्म होने के बाद आपका होमवर्क क्या है कि स्कैन, किसी ने पूछा था कि हाउ मेनी स्टॉक डू आई नीड टू लुक एट इट. देखिए मैं हमेशा हर दिन, मेरा तो सेट नंबर ऑफ स्टॉक्स है ही, ऑलमोस्ट 200 स्टॉक्स है एंड सबका डिमांड एंड सप्लाई मार्क किया हुआ है. मैं हर दिन शाम को देखता हूं कि कौन सा स्टॉक मेरा डिमांड जोन में आए हुए हैं, कौन सा स्टॉक मेरा सप्लाई जोन में आया हुआ है. Okay, these strategies works only in the stocks and stock options. Absolutely. Yes, and at the same time, it works excellently well in the indices as well, right? Absolutely, Arul. It works fantastically in the indices. Okay. Abhi main aapko, okay. So how to mark the zone? Now the question is how to mark the zone. Let's say this is the demand zone. Now demand zone में यहाँ पे देखिए ये candle is the base candle. This last candle is the base candle. Now lowest, and this candle is prior to the base candle. Okay. So what is the lowest point? This is the lowest point. हम लोग क्या करेंगे? Lowest point को mark करेंगे. Now this is called a distal line. What is the call? This is called distal line. Distal line. Okay, this is called the distal line. And second, the body of the candle, base candle. Okay, so this is the body and this is called a proximal line. Okay, this is called a proximal line. So there are two lines, one is called distal line and one is called proximal line. Okay, so there are 3 different methods of drawing the demand zone. Sir, you explained very well. Hope our fear of buying at base goes away. देखिए नीलव, it's a very important question. क्योंकि देखिए जब प्राइस डिमांड जोन में आते हैं, सपोज आपका पास कोई डिमांड जोन नहीं है, प्राइस इज फॉलिंग वर्टिकली, प्राइस इज फॉलिंग वर्टिकली. ओके, प्राइस इज फॉलिंग वर्टिकली. कितने लोगों का पास ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि मुझे यहां पे खरीदना है? Nobody would love to buy. Nobody would like to buy, right? Because the sentiment is so bearish. The sentiment is so panicked. Sentiment is of so much fear that nobody would love to buy that stock. But if you know that यहाँ पे एक जबरदस्त demand zone है, and then you know that the probability of price bouncing back is very high, and you know that अगर आपका गलत भी हो गया, then you are putting the stop loss here, right? That is what is called high probability, low risk trade.
It is called high probability low risk trade. Now, इसको करने के लिए you have to have enough of confidence. You need to develop your confidence. And आपको देखिए, ultimately market is 90% psychology. This market is 90% psychology, right? You need to develop your confidence on what you are doing. जैसे मनीष ने कहा था कि कोई भी मेथड जब आप यूज करोगे, ट्राई करोगे, मिनिमम 30 ट्रेड्स आपको लेना ही चाहिए मिनिमम. अगर आप डिमांड एंड सप्लाई जोन कभी ऊपर एक ट्रेड करके, बहुत लोग क्या करते हैं कि एक ट्रेड लेते हैं एंड अगर वहां पे जबरदस्त प्रॉफिट हो जाता है तो बल्ले बल्ले सब लोगों को कहेगा कि ये बहुत बढ़िया मेथड है. बट वो जो ट्रेड सक्सेस हो गए हैं, दैट कुड बी ड्यू टू सम अदर रीजन, दैट कुड बी ड्यू टू सम सो मेनी अदर फैक्टर्स. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप रिपीटेडली वो मेथड को ऊपर बेस करके ट्रेड करोगे, and then you find out, yes, 60% of the time my trades are successful, 60% of the time I'm making more money in successful trade, then your confidence goes up. Okay, this is exactly how take advantage of fear and greed of the retail traders. Exactly a role, right? That is exactly what the retail trader does. Okay, so this is where, see, this is where now dekho, I have identified so many demand and supply zones in the real chart to show you, but because the concept is long, I'm sticking to my chart only here, PPT. I hope it's fine, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है. यू नो, यू कैन गो टू डिफरेंट स्टॉक्स टुडे. अभी आप करंटली आप निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में देखो, पास्ट में रिलायंस में देखो. अभी रिलायंस का जो करंट मूव है, आई बॉट इट around 220, 270 or 80 rupees. The moment the price started coming out of the demand zone, right? कैसे किस तरीके से प्राइस वहां से मूव हुआ था. So this is an explosive move. Okay, now this is an explosive move. Exactly. Now this is a real chart. Can you see that? So क्या हुआ था यहां पे, देखिए प्राइस यहां पे था, एक दिन गैप डाउन. नो, यहां पे बहुत चीजें हैं. अभी देखो, और एक इंटरेस्टिंग चीज है गैप्स. ओके, नाउ हम लोग अलग अलग तरीके का गैप्स होता है. अभी देखिए बहुत जो कन्वेंशनल टेक्निकल एनालिसिस में गैप्स है, उसका बाद भी हम लोग और एक तरीके से गैप्स को डिफाइन कर सकता हूं, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल एंड नोविस गैप, राइट? ये प्रोफेशनल गैप क्या होता है? द गैप व्हिच इज क्रिएटेड बाय big institutions. Okay, that is called professional gaps. And what is a novice gaps? The gaps created by the fear of the retail trader, that is called novice gap. Now दोनों का इंटरप्रिटेशन अलग अलग है. A professional gap shows reversal of the trend, right? It might show, दोनों का इंटरप्रिटेशन अलग अलग है. नाउ देखिए यहां पे था, उसका नेक्स्ट डे मार्केट यहां पे था. अभी ये इसको हम लोग एनालाइज करते हैं. नाउ नेक्स्ट डे द स्टॉक ओपन गैप डाउन, यहां पे खुला. क्यों? व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन? नाउ पॉसिबल रीजन की बहुत बुरी खबर आ गया. ये जो स्टॉक है ना, दिस पर्टिकुलर स्टॉक, मान लीजिए एबीसी, ये जो स्टॉक है उसका नाम है एबीसी. ये स्टॉक का नाम क्या है? एबीसी. नो, ये स्टॉक का बहुत ही बुरी बैड न्यूज आ गया. बैड न्यूज आ गया. नाउ जैसे बड़ी बैड न्यूज आ गया, सारा रिटेल ट्रेडर्स डर गए. सो जैसे नेक्स्ट डे मार्केट खोला, everybody wanted to sell the stock, yes or no? And as a result market opened gap down huge. लेकिन the moment market opened gap down, यहां पे खुला, institutional traders took this opportunity. They knew that whatever bad news has come, that bad news is temporary, but this is a great opportunity. They started buying and created this explosive move. Can you see that? So this is how we identify this base area. We wait for the price to come back to the base area again.
and that is where we buy. Okay, sir, I think the recent chart of Nifty 50 will be a good example to show how gap, considering how it's trading. Absolutely right. I wish once I finish this portion, I'm going to show you. Second is a freshness in the price. Now, second important point, हम लोग ने कहा था कि once you mark the zone, right? So this is a rally, base and drop. अभी तक प्राइस यहां तक नहीं आया है, राइट? प्राइस नहीं आया है, इट मींस ये जोन अभी भी क्या है? फ्रेश है ना? हमेशा फ्रेश। तो जब आप एक ओके, लेट मी गिव एन नाउ, यहां पे क्या हो गया? यहां पे वही डिमांड जोन, सप्लाई जोन क्रिएट हुआ था, प्राइस नीचे आ गया, प्राइस यहां पे दोबारा वापस आ गया। सो नाउ दिस जोन इज नो लॉन्गर फ्रेश, यस और नो? ये जोन अभी फ्रेश नहीं है। ओके, सो नाउ इट्स समथिंग लाइक दिस। अगर आप एक को वॉल को तोड़ना है, देयर इज अ बिग वॉल, ओके, एक बहुत बड़ा वॉल है, ब्रिक वॉल है, कंक्रीट का वॉल है, ठीक है, इस वॉल को आपको तोड़ना है, तो आप क्या करोगे? आप काफी सारे लोगों को आके लकड़ी लेके उसको हिट करोगे। सो व्हेन यू हिट द वॉल, what is the chance that the wall will be broken? If the wall is strong, it is not going to be broken, है कि नहीं? But definitely it is going to be weaker than before. Abhi, before the hit, the wall is a strong wall, but after the hit, the wall is going to be a weaker one. So now, जब second time आप इस wall को दोबारा hit करोगे, second time के लिए जब आप just a second, सेकेंड टाइम के लिए जब आप इस वॉल को दोबारा हिट करोगे, राइट, सेकेंड टाइम के लिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेकिंग दिस वॉल इज मच हायर देन इट वाज हियर, yes or no? The probability that wall this time is going to be broken is higher here than it was here. Do you agree with me? Yes or no? Now suppose third time भी, second time भी ये नहीं टूटा, now definitely it has become more weaker now than the third time. So here, when you hit the wall for the third time, the probability of breaking the wall has become extremely high now. Are you getting my point? So iska matlab ki when the price is coming to the supply zone or the demand zone for the first time, the probability that the zone is very strong and the price is going to be repulsed back. Okay, so when the price goes back to the zone which is not fresh, which has already been once here, डबल जाता है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाता है कि ये दोबारा वापस ये करेगा, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस ब्रेकिंग थ्रू बिकम्स वेरी हायर, राइट? दैट इज हाउ द सप्लाई जोन्स आर ब्रोकन। अगर थर्ड टाइम में भी ब्रेक नहीं हुआ है, फोर्थ टाइम में तो प्रोबेबिलिटी बिकम्स एक्सट्रीमली हाई दैट इट इज गोइंग टू बी ब्रोकन नाउ, राइट? आर यू ओके? कैन यू इज द कॉन्सेप्ट क्लियरली एक्सप्लेन्ड? Have you understood the concept, how to measure the demand and supply zone from the freshness perspective? Can you give me a quick check in the chat box, guys? Okay, so this is exactly what has happened. Third time, price came, it became, and the fourth time, what happened? Boom, price has broken the supply zone, and that is why price keep on moving up, right? Every time आप देखोगे जब बहुत strong, अभी देखो currently हम लोग का market निफ्टी में, you know, it was in the supply zone for quite some time. It spent time, it absorbed all the supply, and उसका बाद वो supply zone को break करके ऊपर निकल गया। जब break करेगा क्या उस time retest होगा या नहीं? ओके, एब्सोल्युटली हो सकता है मिस्टर गौरव, आपने शायद ये क्वेश्चन पूछा था, है ना? अभी देखिए, वेरी गुड का क्वेश्चन, मैं इस कॉन्टेक्स्ट में आंसर देता हूं। थैंक यू अवनीत, थैंक यू नीलव, thank you all of you, Vipin, Savat, example ITC we have, yes, absolutely, उस time का बात है, absolutely, ITC 203, exactly, it's moving in a range, you know. Now Asian Paints, there are so many stocks now. Okay, now मान लीजिए ये ब्रेक हो गया, okay, now this is called breakout trade. अभी देखो, मैंने दो ट्रेड का बात किया था, कौन सा? पुल बैक ट्रेड। एक ट्रेड कौन सा था? पुल बैक ट्रेड।
और एक ट्रेड कौन सा था, ब्रेकआउट ट्रेड, है ना। सो पुल बैक ट्रेड कौन सा था, द पुल बैक ट्रेड आर दिस ट्रेड्स आर पुल बैक ट्रेड। ओके, सो दिस ट्रेड्स आर पुल बैक ट्रेड। ये कौन सा ट्रेड है, दिस इज अ पुल बैक ट्रेड, राइट। नाउ दिस इज अ पुल बैक ट्रेड। नाउ अभी क्या होता है, समटाइम्स एज ए एक्सपीरियंस ट्रेडर आपको खुद को जांच करना पड़ेगा। अगर मार्केट जबरदस्त स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है ना, हो सकता है कि स्टॉक इज नॉट गोइंग टू पुल बैक, तो वहां पे और एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहता हूं कर्विंग। ओके, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट। So this is a pullback trade. Now this is what is called a breakout trade. The moment price has broken out, you enter the trade. Now some who asked me retest, किसने पूछा था मुझे, गौरव ने पूछा था। Now suppose you could not take the breakout trade, जैसे प्राइस ब्रेकआउट हो गया इस जोन से, आपने ट्रेड नहीं ले पाया, है ना। क्योंकि क्या होता है ऑफन ब्रेकआउट में क्या होता है, वैसे मैं इसे ड्रॉ करता हूं, हाँ क्लीन। ओके, सो ब्रेकआउट में क्या होता है, इतना फियर्सफुल ब्रेकआउट होता है ना, आपको मौका नहीं मिलता है यहां पे खरीदने के लिए, और यहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम गैप भी हो जाता है। ओके, एक टू गैप हो जाता है, और एक प्राइस इतना जोर से भागेगा कि आपको एंट्री करने का चांस नहीं मिलेगा। अगर आपको एंट्री करने का चांस नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे, यू विल वेट फॉर द प्राइस टू पुल बैक। ओके, you will wait for the price to pull back. So you can, now what happened, this supply zone has converted to a demand zone. The supply zone is going to work like a demand zone now. Okay, so you can buy here in the next pullback. Okay, so this is okay, this is what, this is exactly where you are going to buy, and this is how the price action has taken place. Okay, so very good. And the third important thing is a reward. Okay, buy at dips. Okay, absolutely. Now हम लोग ने एक बात कहा था कि हाई क्वालिटी ट्रेड, हाई, I think we are getting late. I'm not going to take more time. I'm going to finish in next few minutes. Okay, so what are the characteristics of a high quality trade? High quality trade, हाई क्वालिटी ट्रेड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? नंबर वन इज हाई प्रोबेबिलिटी, हाई। नंबर टू इज लो रिस्क, एंड नंबर थ्री इज व्हाट, हाई रिवॉर्ड। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट हाई प्रोबेबिलिटी। सो हाई प्रोबेबिलिटी कौन बताएगा आपको, एक्सप्लोसिव मूव, एक्सप्लोसिव मूव, है ना, नंबर वन। नंबर टू, नॉट केम टू दिस एरिया, it's coming to the area for the first time. Freshness of the zone is absolutely fresh. So because of these two criteria, your probability becomes very high, है ना। Low risk, so when you buy in the demand zone, you put the stop loss below the demand zone, your risk is only this much. That is what is called low risk. Now third is high reward. When you buy in the demand zone, when you buy in demand zone, your target is corresponding supply zone, right? Minimum stop loss, absolutely. Yes, absolutely Atul. Even 15 मिनट का चार्ट में भी आप डिमांड एंड सप्लाई जोन ले सकते हो, राइट। बट अगेन मैं आपको एक बात, ये एक इट नीड्स लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, कि काली जाके मत कीजिएगा। आप जाके चार्ट को आज देखिएगा, उसका बाद प्रैक्टिस कीजिएगा, पेपर ट्रेड कर दीजिए करिएगा, उसका बाद जब धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तभी ट्रेड करना चालू करो। क्योंकि यहाँ पे जो भी हम लोग डिस्कस कर रहा हूं ना, इट इज अ स्मॉल टिप ऑन द आइसबर्ग। आई टुक सेवरल इयर्स टू गेन कॉन्फिडेंस ऑन द सिस्टम। मैं आपको मेरा ट्रूथ बताता हूं, मैंने ये सिस्टम 2010 में सीखा था, राइट।
बट इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज उसका पहले मैं कन्वेंशनल टेक्निकल एनालिसिस यूज करता था, जो हो मैकडी, आरएसआई, स्टोकेस्टिक्स, इंडिकेटर्स वगैरह। लेकिन इसका ऊपर कॉन्फिडेंस डेवलप होते होते काफी टाइम लग गया। यस, है ना। तो जब तक आप पूरा का पूरा कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, तब तक आप प्लीज दोबारा यूज मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच अतुल। राइट, सो यस, दिस इज व्हाट इज अ ऑपोजिंग सप्लाई जोन। सो नाउ अगर आप यहां पे बाय कर रहे हो, तो आपका रिवॉर्ड कितना है? आपका रिवॉर्ड इतना है। यस और नो? क्योंकि टारगेट इज योर रिवॉर्ड। सो दिस इज द रिस्क, दिस इज द रिस्क, this is the risk, and this is the reward. Okay, so that is why you say high probability, low risk, and high reward. Okay, so now let's come now entry. Let's very important quickly, there are 10 entry है। कोई भी डिमांड जोन, ये मान लीजिए डिमांड जोन है, दिस इज योर डिमांड जोन। अभी देखिए, मैं अक्सर ये क्वेश्चन पूछता हूं, जब whenever you trade, whenever you want to buy a stock, अगर आपको कोई भी स्टॉक को खरीदना है, राइट, 3 पॉइंट है। एक है एंट्री, एक है स्टॉप लॉस, एक है टारगेट। ठीक है। नाउ एज ए ट्रेडर आपको कौन सा पॉइंट फर्स्ट मालूम होता है? आप मुझे बताइए चैट बॉक्स में जाके, व्हिच पॉइंट यू नो फर्स्ट? बोट, अरुल, बोट। ओके, नाउ यू गो एंड टेल मी, you tell me, right, out of these 3 points, which is the first point that you are going to decide? Is it going to be your entry point? Is it going to be your stop loss point? Or is it going to be your target point? Okay, Mr. Rahman, Dr. Rahman ने किया है entry. Okay, very good. See, that's what I want to make you think. So when I explain the concept, you'll be knowing it. Okay, stop loss, SL. Okay, Priyanka, stop loss, entry, Parv, okay, entry. Please go ahead, type your answer in the chat box. Okay, all of you, entry, very good. Nothing right or wrong, right? We are all learning. यहाँ पे कोई गलत सही बोल के कोई चीज नहीं है। ओके, स्लाइटली अवे फ्रॉम द जोन। ओके, अरुल, एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस, प्रियंका, अरुल, एंट्री, अतुल। ओके, ग्रेट। चलो, हम लोग का थोड़ा 50-50 में डिवाइड है। ठीक है। अभी देखो, आप देखो ना यहाँ पे, है ना, मनीष, एंट्री anywhere in the zone after confirming the candle pattern. Okay, very good, very good. Now abhi dekho, in this example the price is exactly here at this point of time, and you know that this is a demand zone. You know that this is a demand zone, aapko kharidna hai. So 1 2 3 Vinod, you don't know kahan pe खरीदोगे आप। हो सकता है आप यहाँ पे भी खरीदोगे, यहाँ पे भी खरीदोगे, और यहाँ पे भी खरीदोगे। But whatever your entry, your stop loss is fixed, that is below the demand zone. You know, whatever your entry, आप हो सकता है कि यहां पे भी एंट्री करोगे, हो सकता है आप यहां पे एंट्री करोगे, हो सकता है आप यहां पे एंट्री करोगे। ओके, लेकिन आपका स्टॉप लॉस इज गोइंग टू बी बिलो द डिमांड जोन। इसका मतलब द फर्स्ट थिंग दैट यू नो इज द स्टॉप लॉस। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू नो। सेकेंड, ऑल्सो यू नो कि अगर आप यहां पे खरीदोगे, देन इफ देयर इज अ कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लाई जोन हियर, देन इट इज अ टारगेट। सो आपको सप्लाई जोन, टारगेट भी मालूम है, लेकिन आपको एंट्री अभी तक मालूम नहीं है। एंट्री कब मालूम होगा? कल। अभी देखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंट्रीज आर देयर। ओके, एंट्री वन क्या होता है? एंट्री वन इज, okay, you tell me guys if you're in a hurry to close the session, I will close it. Okay, or I'll just take you few more minutes. Of course we are being extending by lots of time. Okay, आप मुझे बता दीजिएगा. Now this is called number 1 entry. So what is the number 1 entry? The moment price come and touches the demand zone, मतलब इतना सेंसिटिव है कि प्राइस जैसे डिमांड जोन में टच किया, उसी पॉइंट में आपने एंट्री कर लिया. ओके, that is a number 1 entry.
Now that is called number 2 entry inside the zone. That is called number 2 entry. आपने रुका भाई, नहीं भाई थोड़ा रुक जाओ, मैं जोन का अंडर लूंगा, तो आपने जोन का अंडर, दिस इज जोन एंट्री, इन द जोन एंट्री. ओके, दैट इज द नंबर 2 एंट्री. नंबर 3 एंट्रीज क्या है? हाँ भाई, प्राइस डिमांड जोन में आ चुका है, बट आई वांट द डिमांड जोन टू बी कंफर्म्ड. मुझे प्रूफ चाहिए कि प्राइस यहां से ऊपर जाने वाला है, उसका बाद ही मैं खरीदूंगा. तो दिस इज कॉल्ड द थर्ड एंट्री. जब प्राइस डिमांड जोन से निकलने लगेंगे तब आप नंबर 3 एंट्री लीजिए. दैट इज कॉल्ड कॉन्फर्मेशन एंट्री. ओके, सो नंबर 1 इज कॉल्ड प्रोक्सिमल एंट्री. जैसे प्राइस प्रोक्सिमल लाइन को आके टच किया, और हालांकि 10-15 पैसा पहले ही, दैट इज कॉल्ड प्रोक्सिमल एंट्री. दैट इज कॉल्ड जोन एंट्री, एंड दिस नंबर 3 is called confirmation entry. Okay, now same is the case in the supply zone. Number 1 is the proximal entry, number 2 is a zone entry, and number 3 जब supply zone से स्टॉक गिरने लगा, जब स्टॉक गिरने लगा एंड कंफर्म हो गया कि अभी स्टॉक गिरेगा, तो यहां पे आपने एंट्री लिया. ओके, दैट इज कॉल्ड कंफर्मेशन एंट्री. ओके, नाउ दोनों का एडवांटेज डिसएडवांटेज है. प्रॉक्सिमल एंट्री का एडवांटेज क्या होता है कि जब डिमांड जोन आ गया, सॉरी, प्राइस आ गया, यहां पे आपने खरीद लिया, सो पॉसिबिलिटी ऑफ मीटिंग द एंट्री इज द हाईएस्ट. इसका मतलब कि आपका ट्रेड होगा ही होगा, है ना. मतलब आपने यहीं पे ऑर्डर डाल के रखा है, आपको ट्रेड मिलने का चांस बहुत ज्यादा है. ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ मीटिंग द एंट्री इज हाईएस्ट. ओके, सेट एंड फॉरगेट स्ट्रैटेजी इन मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म. आप कोई भी प्लेटफॉर्म, पेटीएम मनी का प्लेटफॉर्म यूज करोगे तो आप ऑलरेडी एंट्री प्राइस डाल के रख दीजिए, आपका स्टॉप लॉस डाल के रख दीजिए, ऑटोमेटिकली ऑटोमेटेड ट्रेड हो जाएगा. अगर कोई काम करते हैं, कोई ऑफिस में जाना चाहते हैं, ऑफिस में काम करता है, देन ही कैन प्लेस द एंट्री एंड स्टॉप लॉस एंड गो टू हिज ऑफिस. ओके, नाउ डिसएडवांटेज क्या है? रिस्क ज्यादा है, क्योंकि आपका बाइंग यहां पे हुए हैं, आपका स्टॉप लॉस जोन का नीचे लगेगा, रिस्क इज हायर, है ना. सो हायर रिस्क. सेकेंड एंट्री कौन सा होता है? आप जोन का अंडर एंट्री लेते हो. नाउ जब आप जोन का एंट्री लेते हो, दिस इज कॉल्ड जोन एंट्री नंबर 2. एंट्री नंबर 2 में एडवांटेज क्या होता है कि आपका रिस्क बहुत कम होता है, आपका रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि क्लोजर टू योर स्टॉप लॉस. लेकिन अगर प्राइस यहीं से बाउंस कर गया तो आपको ये ट्रेड नहीं भी मिल सकता है. सो दैट इज अ डिसएडवांटेज. आपका चांस है कि ट्रेड मिलेगा ही नहीं. अगर ये डिमांड जोन बहुत ही पावरफुल है और प्राइस किस करके ही निकाल गया, देन आपको ट्रेड मिस हो जाएगा. सारा दुनिया आपको लगेगा बाद में, हाँ भाई, कुछ पैसा बचाने के लिए मेरा एक बहुत हाई क्वालिटी ट्रेड मिस हो गया. राइट, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसिंग द ट्रेड इज एक्सट्रीमली हाई. नाउ व्हाट इज अ कॉन्फर्मेशन ट्रेड? कॉन्फर्मेशन एंट्री में जब कॉन्फर्मेशन एंट्री में क्या होता है कि जब प्राइस जोन छोड़ के निकालने लगता है, उस टाइम आप एंट्री लेते हो. तो वहां पे एडवांटेज क्या होता है कि आपका प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है कि प्राइस ऑलरेडी निकल रहा है जोन को रेस्पेक्ट करके. लेकिन उसका रिस्क क्या है कि रिस्क है कि ये ट्रेड नहीं भी मिल सकता है. लोएस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ मीटिंग द एंट्री, लोएस्ट पॉसिबिलिटी, क्योंकि जब डिमांड जोन से प्राइस यहां से भागता है ना, बहुत तेजी से निकल जाता है, तो यहां पे लोग मैन्युअली एंट्री नहीं कर पाते हैं. तो वहां पे अगर आपका पास कोई ऑटोमेटेड सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिस्टम का थ्रू आप एंट्री लेना चाहते हो, तो नंबर 3 एंट्री इज वन ऑफ द वेरी गुड एंट्री. बट अगेन, the highest probability of getting the trade is number 1 entry, guys. Sounds good? So actually it took a lots of time. सर एलटी का चार्ट दिखा के बताओ. ओके, ओके, चलो हम लोग एक चार्ट भी फटक से दिख लेते हैं, है ना. ओके, कहाँ पे है? एल एन टी. आईसीआईसीआई, आपको एल एन टी दिखना है, लर्सन एंड टब्रो. लेट्स गो एंड
ओके, अभी देखो एल एन टी, एल एन टी इज इन ए वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, राइट? अगर आप डेली चार्ट में देखो, एल एन टी इज इन ए वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, इट्स इन ए वेरी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, राइट? कंटिन्यूअसली इट्स इन ए वेरी अप ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। बट अगर आप पास में देखोगे कि अलग अलग पॉइंट में उसके एंट्री हुए हैं, नाउ करेंटली हियर, राइट? सो हियर इज अ सप्लाई जोन, दैट इज अ सप्लाई एरिया, यहाँ पे प्राइस आके रुका है। नाउ यस, it's a okay, let me go to, now it's a very strong, again it's a very in a strong uptrend. Just a sec, this stock is in a very strong uptrend, LNT is in a very strong uptrend. Now the probability of breakout is very high, so here आपका कौन सा ट्रेड बनेगा? ब्रेकआउट ट्रेड, ठीक है? So here the possibility of getting a breakout trade is extremely high because the stock is in an extremely strong uptrend. So therefore, what trade you are going to look for is a breakout trade, okay? Because this is the area, यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग, देयर इज नो, सी व्हेन द स्काई इज इन ए ब्लू स्काई टेरिटरी, जब प्राइस वहां पे है जहां पे पहले प्राइस गए ही नहीं है, वहां पे सप्लाई कैसे हो सकता है? देयर इज नो सप्लाई, है ना? तो इसीलिए क्या होगा, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग होगा एंड वहां से माइनर सप्लाई जोन क्रिएट होगा, एंड बार जब ये सप्लाई जोन ब्रेक करेगा दोबारा प्राइस ऊपर जाएगा, राइट? अभी देखिए मैं आपको काफी सारा एक मिनट, निफ्टी, बैंक निफ्टी में दिखाना चाहता हूं। निफ्टी, बैंक निफ्टी कहां गया? ओके, हियर, ओके, कैन यू सी दैट नाउ? अभी देखो बैंक निफ्टी हियर, सेम इज द केस। काफी लोगों ने पूछ रहा था कि रिट्रेसमेंट क्यों नहीं होगा, देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया था बैंक निफ्टी, उसका बाद देखो वापस रिट्रेस बैक हो चुका है। अभी बैंक निफ्टी कहां पे है? बैंक निफ्टी इज बैक टू, कहां पे है? जस्ट सेक, मैं आपको दिखाता हूं बैंक निफ्टी कहां पे है। दिस इज द लोएस्ट पॉइंट इन दिस एरिया, कैन यू सी दैट? This is the area where the explosive rise has started. Bank Nifty has come back to this area again, right? So now, no doubt, sentiment in the Bank Nifty is pretty high, but I don't want to be a seller in Bank Nifty. I'm going to look for buying opportunities now. That is what I am going to do. Okay. Now, फटाफट मैंने दो एक और स्टॉक दिखा देता हूं। रिलायंस, one of my very very favorite stock, कहा गया? Shake. Okay, let me find it out. Okay. Okay, now see, this is the movement of Reliance, right? यहां से रैली चालू हुआ था। मैं आपको एक वेरी क्विकली, देखो ये डिमांड जोन है रिलायंस का, देखो उसका पहले रिलायंस गिर रहा था, गिर रहा था, गिर रहा था। कैन यू सी द बेस हियर? कैन यू सी द बेस हियर? Don't you think this is a base? Can you give me a quick check in the chat box? Do you think it's a demand zone, guys? Is it a demand zone? Right? Is it a demand zone? Just give me a quick check in the chat box. It is a demand zone, right? It is a very powerful demand zone, है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, सॉरी, इसको आगे खींच लेंगे। Right? Can you see that? Can you see that? This is the origin of the demand zone. And Reliance come back to this demand zone. It is falling from here. And where it has started falling from? It started falling from the supply zone. Right? This is a supply area. Sorry. This is a supply area. Rally base drop. यहां से गिरना चालू हो गया था, डिमांड जोन में आ गया था,
एंड वहां से ये रैली हुआ, ठीक है. नाउ दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव डन. ओके, चलो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच. आई थिंक आई हैव माय warning from the back side. We have to wrap it up. Thank you so much, guys. If you have got any questions, we are going to discuss it tomorrow. Okay, we are going to take all the questions tomorrow. So far, so good today. We have exceeded by 30 minutes, but I'm sure at least अगर आपको कुछ new concept समझ में आए हैं, और मतलब if I could justify the time that you have invested here, right, then it's really nice. I'll be it will be great for all of us. So with that, I would like to close the session today. Right, tomorrow again, please do join. Tomorrow's session is going to be taken by Manish. Again, Manish is going to, just a sec, let me stop share. Okay, so tomorrow, do not forget to join the session. We are going to join exactly at 6 o'clock tomorrow. Please do join. Manish is going to share some of the very, very exciting concept tomorrow with respect to demand and with respect to very, very powerful concept with respect to different indicators and the price action. So thank you so much. Looking forward to see you tomorrow, all of you. Good night. Bye-bye. Thank you so much.